See guys, what's the intention of this RC? है ना कि first thing we are talking about the scientific domain and theology means God's domain, right? So we are talking about the comparison between scientific as well as the God's domain, right? अब यहाँ पे क्या है, as I had suggested you how you could have summarized this RC in a better way or in an efficient way is read the chunks in bigger clusters. कभी भी तुम्हारे पास अगर साइंटिफिक टाइप्स ऑफ आरसी आ जाए तो ऑलवेज ट्राई टू रीड द आरसी इन बिगर चंक्स, right? For example, let's see how I read this RC. Mountains have long posed intellectual difficulties for those who have pondered their meanings and origins. Okay, so we are talking about the challenges. That's it. Following a trip to the Alps in 1671, example of mountain, the English theologian and natural philosopher, this guy described the mountain landscape with revulsion, remarking that its vast undigested heap of stone defy any tolerable count of how that confusion came in nature. So here what he is doing, he just describing the nature of mountain, that the nature is that it's a vast undigested heaps of stone. So we have started describing what intellectual difficulties, what are the difficulties mountains have posed. So before that, what the author is doing, he is describing how mountains are. They are vast undigested heap of stones. Now what I did, I made the chunk a big one, like the complete sentence. Sometimes if you are facing difficulties in reading the RCs, what you could have done, those who are facing difficulties in reading the RC, what you could have done, following a trip to the Alps in 1671, this guy, Thomas Burnet, described the mountain landscape with revulsion, remarking that its vast undigested heap of stone defy any tolerable count of how that confusion come in nature. So you could have broken that into 5 segments, right? So once you are breaking that into, yeah, one more thing, when you are making the chunks, now when you are making the clusters of the RC, what you have to keep in mind is that every single chunk that you have created should signify some meaning for sure, right? For example, following a trip to the Alps in 1671, that means he's talking about one trip that he did. Thomas Burnet, we are talking about some person. He was a theologian, he was a natural philosopher. Describe the mountain landscape with revulsion. So he is trying to describe the mountain, remarking that it's a vast undigested heap of stone. That means how mountains are undigested heap of stone. Defy any tolerable account of how that confusion came in nature. There is some confusion that he wants to target, how that came. So every single chunk, every single cluster will make a significant meaning to me. First thing, right? Apart from this, what we have to keep in mind is that, but if you are, what's the disadvantage of making smaller chunks? It might break your flow and it will not let you achieve the speed that you want to attain before cat. है ना? So right now, if you are facing difficulties, you can make smaller chunks, but yes, with time, try to make the bigger chunks. What that bigger chunk might be? Sometimes a complete sentence, sometimes the sentence divided in two. And that's the usage of, let's see, here the usage of comma, etc., etc. What are these? They are trying to showcase, yeah, this might be a chunk you can consider, right? Coming back to the RC, seeking to understand why such atrocities would even be part of creation, right? So what is the atrocity I'm trying to talk about? Is there some atrocity that we have discussed? No, not yet, but he had showcased the intellectual difficulties, right? Along with that, he had said that it defies any tolerable account of how that confusion came. So there is something that is intolerable in nature, and that is being showcased by this word atrocity, right? Seeking to understand, and who is trying to understand? This guy, Thomas Burnet, है ना? To seeking to understand why such atrocities would even be a part of creation, he noted with scholarly astuteness that mountains are absent from the first chapter of Genesis and thus not original features on earth, though they had apparently come into being in time for this and this to wash upon the slopes of Mount Ararat. So these are the challenges we are trying to discuss. Why we are trying to discuss? Because they were not a part of that creation when the earth was getting created for the first time. It came into being afterwards, right? In his this book, Burnett suggested that the primordial earth had been a smooth, mundane egg that cracked
and released the deluge that Noah had to survive. Mountains were the resulting scars on the face of earth. Their stern presence a reminder of and punishment for men's iniquity. Now, see, the confusion is whether he's trying to portray the mountains in a good way or the bad way. That is still not justifiable. Why? Because he's trying to understand that why such atrocities would even be a part of creation. He has talked about mountains. Again, he has said mountains were the resulting scars. So scars are something that we say कि हाँ चलो ये घाव था इसका scar रह गया. So it is something very negative that we talk. So is he trying to talk about mountains in a negative way? Still I have to showcase that. Let's see. तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस करा? Mountains creation, how it was created. Earth के when the earth was getting created for the first time, mountains weren't there. Something happened, some procedure happened. As a result, mountains were formed. Right? Initially, Earth was just like an egg. Okay? And all these ideas are from whom? All these ideas are from Burnett. Right? Burnett's ideas are easy to ridicule and were treated with particular scorn by this guy, one of the 19th century's founding figures in geology. Now, easy to ridicule. What we can ridicule? अगर हम लोगों को रिडिक्यूल करना ही होगा बर्नेट की थ्योरी को, तो व्हाट वी कैन रिडिक्यूल? उसने बस अभी तक ये बोला है कि अर्थ जब फॉर्म हो रहा था तो माउंटेन्स वेरंट अ पार्ट ऑफ इट. तो हो सकता है कि दी जियोलॉजिस्ट माइट बी ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट कि भाई वो पहले से था, ऐसा भी हो सकता है. लेट्स सी. But as this guy argued in Times Arrow, Burnett's approach was rational. तो नाउ यहां से जो है दिस इज द ऑथर्स ओपिनियन कि बर्नेट के आइडियाज को हम लोग रिडिक्यूल कर सकते हैं. देयर आर scientists or geologists who tried to ridicule it, but there are some other geologists who said कि नहीं उसका आइडिया जो था that was rational. तो all these things that we are talking about, all these are authors opinion. In that he was attempting to integrate sacred and secular knowledge into an internally consistent narrative. In fact, Burnet was correct on two counts. Now we are trying to prove why it is rational. Mountains are not primordial features, जो उसने बोला कि पहले से नहीं था, and mountains building does involve disrupting the earth's outer shell or crust. So the scare we were see how every paragraph is getting connected. So the scars that we were talking about, this point proves that it was like a scar. Why? Because mountain building does involve disrupting the earth's outer shell or crust. My own field, known as structural geology, concerns itself with the deformation of the planet's crust, though of course we have long since abandoned notions of a primeval egg. We map active fault zones that generate earthquakes and ancient ones that host ore minerals or act as traps for petroleum. We help with the shape. So he's talking about what this field consists of. Structural geology. इसमें ये लोग क्या करते हैं? They map the fault zones where earthquakes are coming. They help the safe siting of large infrastructure projects such as tunnels, bridges, and dams, and we document the growth of mountains. So these are the things this field, his field tries to talk about, right? Stop. What we have read till now. Mountains getting created. Burnett's opinion on those mountains कि they were not primordial, वो शुरू से नहीं थे, they were like a scars, right? Then some geologists came, they tried to ridicule. It was easy to ridicule because हो सकता है उनका opinion हो कि ये शुरू से नहीं था, but then came another geologist who said no, this approach was rational. Why? Because they were not primordial, simultaneously they were really the scars. Now the author is talking about what his field, the field he is related with, that is structural geology, what it consists of, what are the things that it does. The things are that they generate the areas, they try to find the area jahan earthquakes aate hain, they help the locate the sites of infrastructural projects, and all along with all these they document all the creation of mountains. That's it, right? Clear? In 3-4 lines the complete summary has been located in my mind abhi tak. Now let's see. We have talked about structural geology, one part of geology. Now he is talking about geologists didn't have a clear understanding of how mountains came to there even when the first test rockets for the Apollo program were being launched.
Geodynamics had been stuck with speculative theories formulated in the 19th century, the scientific paper that sparked the modern plate tectonic revolution. And understated three-page article in Nature posting the phenomenon of sea floor spreading was published. So all these things that we are trying to talk about, all of them are talking about what, how mountains were created, right? And whether we had the idea that how it got created, it said that no, we didn't, right? Along with that, now we are talking about the speculative theories कि how it is being built. अभी हम लोगों ने ऊपर में बात करा है कि they were not primordial, वो scars के कारण these mountains got formed, etc., etc. So all these he's trying to talk about are all these many, from the many speculative theories that the geologists are trying to talk about. This might be one of them. But it is fascinating to listen in on the conversations among geologists who studied mountains in the century before plate tectonics. Many field-based geologists did excellent observational science that remains useful today, even though they labored under a limited interpretative paradigm. So not important. From here till here, we are trying to talk about some observation. We are trying to say कि हाँ, whether these observations are good or bad. बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा ना मेरे को अभी तक. तो दिस लाइन फ्रॉम हियर टिल हियर इज नॉट important. In contrast, some of the most prominent geologists of the time, less concerned with the messy ground truth of rocks than with staking a claim to a grand unifying theory, contributed to an elaborate fiction about the genesis of mountains that is almost as readable as Burnet's erupting egg. Now, there came a few geologists who tried to explain, and then there came some geologists who were not at all interested in how these mountains were formed. And as they were not interested, they gave some theories, and the culmination of both all these theories, the speculative theories and these theories that came from the geologists who were not at all interested in egg, right? It gave me a fiction about the genesis of mountains. So the things that we are talking about, it's a fiction. It's not the reality the author is trying to talk, right? That is almost as readable as Burnet's erupting egg. Their ardent adherence to such theory exposes a basic tension in the study of Earth, whether it can be understood like the cosmos, subject to timeless laws, or like a language evolving and idiosyncratic. So the basic gist is we are trying to talk about the formation of mountains, and as we cannot come to any conclusive theory ki how these were formed, the author comes to another question, that whether we can understand these cosmos in a better way. This is the conclusion. From here till here, it is the conclusion that we are not going on any confident theory. Everything is just speculative, right? And that's why he's asking the question that can we understand the cosmos? Is it like a timeless laws that is just a significant static, or is it like something like a language that is evolving continuously? So he's trying to ask another question. He had started with one question, he ended with one question, and that's why it is an open-ended article that we have talked about, right? Understood? So once you read it, you can summarize all the significant points that we talked, and then you can directly jump to the questions, right? So what I did, you saw that the best thing that I did was I didn't create something very big, some paragraphs very big or something, right? The only thing that I did is कि I made the chunks. जहां तक मेरे को समझ में आ रहा था वहां तक मैं चंक बनाता चला गया. Sometimes it was one sentence, sometimes it was a part of sentence. Now, if the sentences are very big, I am saying you guys can elaborate it in 2, 3, 4 parts as much as you want, right? But this is how you have to read the RC. When there are commas, when there are hyphens, when there are full stops, you have to stop, right? Let's come to the questions. Here goes your question number 1. Both of them are repeated.
2 minutes to answer this question. All of you should answer the question in the comment section. Perfect. Good job. Okay. सूर्यकांत, संस्कृति, सूर्यकांत कहाँ रहता है भाई तू? फरजान, अभिषेक, रूपाली, नितेश, नमन, स्वस्ति, स्मृति, सुभाली, ओके, कनिका, मैत्री, ओम, सैव्या, सुनिधि, ओके, ऑलराइट. Last 30 seconds, guys. Okay, Vidisha. Arey bapre. There are two answers that I am getting on a continuous basis. One is okay. All right. Okay, Kanchan. Okay, Anurag. Varshit, please change your settings, beta. Last 15 seconds, guys. चल देखते हैं, है ना? क्या दिया? देखो, the options that you were trying to come now, all those are, both the options are cool. I can understand where it is coming from, है ना? He described geological process from a theological point of view. Okay. Okay. So in the first paragraph we read about it, and it is talking about the Thomas Burnett's idea connected to some. I'm sorry guys, Wi-Fi automatically got connected to somewhere that I didn't expect, है ना? Just a second, give me a second. Yeah. है ना? So what we were talking about is कि यहाँ पे मेरे पास क्या है ना कि he described geological process from a theological point of view. One thing, he believed that God had not created mountains at the start. This was also discussed. He argued that God had not created the oceans that caused the deluge. So between A and D, there will be a certain confusion. Why? Just go to the Burnett's opinion in the first paragraph. What he has talked about that all these things describe the mountain landscape with revulsion, remarking that it's vast undigested heap of stone. Right? Mountains were the resulting scars on the face of earth, their stern presence a reminder of punishment or for man's equity. तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे ना, तो द ओनली फोकस दैट आई हैव सीन इज अबाउट द थियोलॉजियन पॉइंट. और ये दिमाग में क्यों आएगा? जस्ट बिकॉज ही वाज अ थियोलॉजियन, है ना? तो सबसे पहले मेरे पास जो कंफ्यूजन आएगा कि he described geological process from a theological point of view. But one thing, guys, he has not ascertained us कि how mountains were created. Last tak what we discussed is how mountains were created. We were not sure about it, right? The geological process from a theological point of view क्या है कि gods का creation, right? But till the end he has not been ascertained कि हाँ how it was actually created. किसी को कोई confusion है क्या? सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा था. सर आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा. Just a second. One second. अभी ठीक है? हाँ सर. राइट, चलो ठीक है. तो अभी अपने पास क्या है कि ही डिस्क्राइब्ड जियोलॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम अ थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एट नन ऑफ द प्लेसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड. हमारा
फर्स्ट से लास्ट तक जो भी बर्नेट के ओपिनियन थे, फिर उसके बाद सारी चीजें थी, राइट, उसमें एक और चीज थी, राइट, कि इट वाज नॉट प्राइमोर्डियल, मतलब कि ये शुरू से नहीं था, है ना। तो थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, गॉड्स क्रिएशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, वी कैन नॉट प्रूव हियर because we haven't talked in detail about the procedure. Now come to D, he argued that God had not created the oceans that caused the deluge, right? Now he is talking about कि सबसे पहला अपना क्या है, what Thomas Burnett's opinion is. थॉमस बर्नेट्स, अब यहाँ डी पे बहुत लोगों का माइंड क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट द माउंटेन्स, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यू आर टॉकिंग अबाउट द ओशियंस। तो डी में तुम्हारा माइंड क्यों नहीं जाएगा, जस्ट बिकॉज कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स, तो माई माइंड विल बी टुवर्ड्स द माउंटेन्स, द क्रिएशन ऑफ इट, राइट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर्स ऑफ दोज जियोलॉजिकल इवेंट्स दैट हैपेंड, ठीक है। तो यहाँ this sentence says God had not created the oceans that caused the deluge. So deluge, when we are talking about this, ki oceans have caused something out, right? So God doesn't have any creation in it, God doesn't have any role play in it. So that means ki he is trying to ascertain us ki bhai jo theological point of opinions are, theological point of opinions that we have, right, that might be true, that might not be true, and he is ascertaining that that's not the case. और यही चीज तो हम लोग डी तक पढ़ते हुए आए हैं, right? So that's why between A and D, I can understand many of you have marked A, but the answer will be D, just because कि यहाँ पे he hasn't described it with the theological point of view. He had said कि हाँ some opinions are there, but that's not the case, right? If sorted, type S. If you have any doubts, please ask. Those who have marked D, very good job. स्क्रीन नहीं दिख रही अभी भी? नहीं दिख रही है यार, सारे लोगों को दिख रही है, एक बार अपना चेक कर लो। हाँ ठीक है, सॉर्टेड। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन गाइस। ओके अभिषेक, ओके वर्षित, think about it guys, okay? Okay मानसी, okay सूर्यकांत, okay स्मृति, कार्तिकेय, प्लीज चेंज योर सेटिंग्स बेटा। ओके शुभाली, ओके अनुराग, लास्ट 10 seconds, ओके सैबिया, ओके शाकिब, ओके हर्षा, शौनक okay Vidisha, please change your settings. I have gotten all the answers A, B, C and D, all of them. ओके कनिका, ओके इससे बाद वाले आरसी में एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन, है ना। लेट्स सी, perfect, stop. According to the passage, until the advent of plate tectonics, our understanding of how mountains came to be there, okay, ठीक है। Now see one thing, until the advent of plate tectonics, where we have discussed it out, Tapan, Tapan, हाँ सर।
कहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया? हाँ सर, कहाँ पे, कौन से पैराग्राफ में? वेट सर, वेट, आई नो। सर हाँ क्या यार? See, geologists Sir, did not have a clear कहीं पे understanding of how mountains came to be there even when the first test rocket of the Apollo program was launched. Geodynamics had been stuck with speculative theories formulated in the 19th century when in 1963 this had sparked that moderate plate tectonics and understated this, and this was published, right? So before this, people were involved in speculative theories, right? तो एंड लास्ट में अगर तुम लोग याद करो व्हाट वी हैड डिस्कस्ड कि about the genesis of mountain that is almost as risible as Burnett's erupting egg, their ardent adherence to such theories exposes a basic tension in the study of earth, whether it can be understood to like the cosmos and all. तो यहाँ से जो तुम्हारे पास आ रहा है ना, जो तुम लोगों के दिमाग में आ रहा था, those who have marked option D, I can complete options. No. Option A, those who have marked option A, I can completely understand. The fiction wala part that we have discussed, you are trying to connect with that fiction wala part. But before what we are talking about, ये जो है, ये fictional part, those who have marked A, ये वाला अभी का current scenario है. What the question is asking, कि how was you until the advent of plate tectonics, how was the understanding? Right? So if I am talking about that wholly based on religious scriptures, completely out of scope, a story of elaborate fiction, this the author has talked about कि भाई अभी अगर if we are talking about the current scenario, so can we completely understand? Can we not understand that, right? तो यहाँ पे जो मेरे पास दिया हुआ है कि with staking a claim to grand unifying theory contributed to an elaborate fiction about the genesis of this and this is the current scenario we are talking, not about the before the advent of 1969 or somewhere. What was the time domain, I don't know, right? That we have read in the third paragraph. So this option will be eliminated, this option will be eliminated. Theological as well as speculative. Theological दिया हुआ था, बर्नेट्स का ओपिनियन वाज काइंड ऑफ थियोलॉजिकल उस समय में, ही ट्राइड टू टॉक अबाउट समथिंग थियोलॉजिकल, राइट? उसी पे डिस्कशन होते होते वी केम टू अ पॉइंट कि हाँ इट माइट बी स्पेक्युलेटिव. बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस इट वाज आल्सो स्पेक्युलेटिव. So this might be my answer based on objective interpretations. So when I'm talking about objective interpretations, what do we mean by that? The things we saw, the things we described, and the things we analyzed, right? So that's the objective interpretation. Ki, what's the motive of us to discuss about the mountains, right? So when I'm discussing about the mountains, so the things we saw, the things we just मतलब क्या बोलते हैं उसको, deciphered from that, and then the results we came to. But we have not come to any results. We have not seen something very significant. All things were delusional in nature, right? So that's why we cannot say it was an objective interpretation. So that's why option D will be eliminated. So option C is the correct answer. Right? If sorted, type S, many of you marked option C. Good job. Those who have marked Sanskriti, got it? Yes, sir. Got it. हाँ. तो नोआ का तो that's what theological में तो वही आएगा ना बच्चा. Sir, Theological. actually, हाँ. it was mentioned कि observational मतलब एक लाइन थी उसमें observational science के according भी था जो अभी भी useful है, तो I was relating objective interpretations to that. नहीं, अभी क्लियर है? Yes, sir. चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ आज के में, देखते हैं वेदर इट्स सुटेबल और नॉट.
1.5 minutes, guys. Okay, Naman. Okay, Farjan. Okay, Sanskriti. Okay, Kanika. Okay, Maitri. Okay, Shakib. Okay, Shubhali. इनको तुम लोगों के आंसर्स देख के बड़ा अच्छा लगता है. I have gotten A, B, C and D all. Okay, Rupali. Okay, Tapan. तो जो आप मार्क्ड ऑप्शन बी, मैं मेरे को तुम्हारे रैशनल समझ में नहीं आ रहा है. व्हाई आर यू मार्किंग ऑप्शन ए सी डी? समझ में आ रहा है, बी वाले क्यों मार्क कर रहे हो? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. And those who are marking option D, again, I am not understanding your rationals. Ki why are you marking option D? Adequately explains. भाई इतने सारे speculative theory है, कैसे adequate हो सकता है यार? तो those who are marking option D, I am not sure why are you marking that. Maitri had changed the answer to C. Kanchan had marked the answer C. Okay, all right. चलो देखते हैं. Last 10 seconds. Okay. Let's see. No, I didn't get you, Sanskriti. I answered as except I didn't get you. मैं समझा नहीं क्या बोली तो. See guys, the author is most likely to agree with which of the following, है ना? So when I am talking about कि सबसे ज्यादा, most likely, right? He might agree with some of the things, but most likely what he is supporting, that we have to check, है ना? So as I mentioned, adequately explains distinct landforms completely out of scope. Because there are so many speculative theories, तो adequately कोई चीज explain कर ही नहीं सकती है. B is talking about breaking of the Earth's crust created oceans and mountains on the primordial Earth, right? प्राइमोर्डियल वाला सिनेरियो को हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया उस तरह से कि इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमोर्डियल ये, राइट? तो ऑप्शन बी इज आल्सो एलिमिनेटेड. Mountains were not a features. The mountains were not a feature of the original Earth, which was smooth and without faults. ठीक है. So when I'm talking without faults and smooth, this smooth I can judge from this part, है ना? कि Burnett suggested that the primordial Earth had been a smooth mundane egg that cracked and this and this and this, right? But when I'm talking about this, वो
बर्नेट के चीज को ला रहा है, then he said that it was also easy to ridicule it out, right? So बर्नेट का दो चीज जो ऑथर डिस्कस्ड वो यहाँ पे था सेकेंड पैराग्राफ में, ठीक है, कि he was attempted somewhere. Burnett was correct on two counts. Mountains are not primordial and mountain building does involve disrupting the earth's outer shell. बस ये दो चीजों पे वो बोल रहा है कि Burnett's opinions were correct. Author is supporting that. But apart from that, all these things that he discussed, along with that, he has also discussed that it was easy to ridicule, right? So अगर उसको ये चीज करना होता, if the author is supporting Burnett's opinion that yes it was smooth, it was mundane, मतलब smooth ही होता है, नीरस वाला जो होता है, ठीक है, कि I live at home, I don't drink, etc etc, my life is mundane, right? So that's the thing. तो मुंडेन वाला पार्ट वहां से अगर आ सकता है, तो इफ ही वांट्स टू सपोर्ट दैट आउट, ही कुड हैव सेड कि इट वाज पॉसिबल ट्रू इन 3 cases, but he didn't say that. Only 2 cases were present. Along with that, he has also mentioned that Burnett's opinion were easy to ridicule, might be easy to ridicule, right? तो वो ऐसा कब बोल रहा है, जब उसको लग रहा है कि हाँ there might be something that can be ridiculed, ठीक है? तो when I'm saying without faults, no, not at all. Now, C says Burnett's explanation of mountains anticipated plate tectonics in several ways. Right? He has talked about it in the first paragraph. Right? It happened in this domain, it cracked, etc., etc. The theological interpretations he gave. Then he talked about the tectonic plates, how this was formed in such and such way, and all those things. So he has discussed this out. So obviously, option C will be the answer in this case. How I came to option C? Other options I was also able to eliminate other options pretty easily. I was also able to eliminate all the option A, B, and D, and that's why option C was an easy choice to me. If sorted, type S, संस्कृति में समझा नहीं तो क्या बोल रही थी, right? If you have any doubts, please ask, or else. Oh, okay. Sorted type S, we can proceed to the next question. सर हाँ. एक बार थर्ड सेकंड पैराग्राफ देखिए. हाँ. Yes. उसमें यहाँ पे नीचे लिखा है कि माय ओन फील्ड, तो वो खुद के बारे में बता रहा है कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में काम करता है वगैरह. और वहाँ लाइन लिखी है दैट दो ऑफ कोर्स वी हैव लॉन्ग सिंस अबैंडन्ड नोशंस ऑफ अ प्रिमेवल एग. तो वहाँ पे वो वही उसका वो उसका ओपिनियन है ना कि एग्जिस्ट नहीं करता ये क्या स्मूथ एंड विदाउट फॉल्ट्स. तो वो प्लेट टेक्टोनिक्स को एग्री करता है, राइट? वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पे काम कर रहा है. नहीं, सुनो. प्लेट टेक्टोनिक्स वाला पार्ट जो है ना, तो यहाँ पे व्हाट ऑथर हैड सेड, मैं समझ गया तुम्हारे ऑप्शन को. व्हाट द ऑप्शन इज सेइंग, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना, कि तू कौन से ऑप्शन की बात कर रहा है? सर डी. प्लेट टेक्टोनिक्स एडिक्वेटली एक्सप्लेन्स डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स. अब देख यहाँ पे वो क्या बोल रहा है. सबसे पहला, he has talked about कि though of course we have long since abandoned the notions of a primeval egg. तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ तू, एक लाइन से कंक्लूजन पे मत पहुंच. Just see what it says. In fact, Burnett was correct on 2 counts. Mountains are not primordial features, and mountain building does involve disrupting the Earth's outer shell or crust. My own field, known as structural geology, concerns itself with the deformation of the planet's crust, though of course we have long since abandoned the notion of a primeval egg. Right? अब तू अपने ऑप्शन पे आ. Plate tectonics adequately explains distinct landforms like mountains. यहां से अगर तू इस नोशन पे पहुंचेगा तो yes you can. But at the end, see the question he has asked. See the question he has asked and the things that he has mentioned contributed to an elaborate fiction about the genesis of this and this. Their ardent adherence to such theory exposes basic tension in the study of Earth.
So there is still that study that is pervading, prevalent कि हाँ whether we have come to something very significant or not, ये भी author का ही opinion है, right? कि the recent studies are creating significant tensions that suggests that we have not come to a pretty elaborative explanation that can be accepted. Got it? That's Okay, why sir. this word was a blunder. Sorted? हाँ सर, समझ। Let's move to the next question. Asa. ओके रूपाली समझ गई बेटा? पिछला क्वेश्चन तू समझ गई? Yes, sir. ओके नमन, ओके शकीब, ओके श्रीकांत, ओके मैत्री, ओके संस्कृति, ओके सुनिधि, ओके स्मृति, ओके कार्तिकेय। देखो कभी भी मैं तुम लोगों को एक और चीज सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी ना आंसर को सिर्फ उसी पैराग्राफ में मत खोजा करो, एटलीस्ट रीड 3-4 lines of the earlier paragraph and 3-4 lines below the line where it is mentioned, तभी तुम एक अच्छे आंसर पे पहुंच पाओगे। ओके नितेश, ओके कुणाल, ओके मानसी, लास्ट 10 seconds guys, ओके स्वस्ति, ओके सोनक, चलो देखते हैं। लेट्स सी व्हाई डज द ऑथर मेंशन द अपोलो प्रोग्राम। आई रिमेंबर दैट अपोलो प्रोग्राम हम लोगों ने थर्ड पैराग्राफ में कहीं पढ़ा था, राइट? यही था ना अपोलो प्रोग्राम। अभी देखो, geologists did not have a clear understanding of how mountains came to be there even when the first test rocket for the Apollo program were being launched. Geodynamics have been stuck with speculative theories formulated in this and this scientific paper that is the modern plate tectonics revolution and understated 3 page. अब यहाँ से एक चीज समझो, what's the essence of this? What's the essence of this paragraph? Why he has introduced this paragraph? Guys, please mute. बीच में देख लो यार, अगर बैकग्राउंड रहे तो उसको म्यूट करके रखा करो, है ना? तो सी द एसेंस ऑफ इट कि व्हाट ही वांट्स टू डिस्क्राइब फ्रॉम हियर। अगर हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करें तो these things, 1963 Apollo program, etc., etc., all these things, what's the essence of this? What he wants to convey? He wants to convey ki how mountains came into being. And he is talking about कि even when Apollo program was launched, उस समय भी हमको clear understanding नहीं थी, right? तो when I'm talking about this, तो essence की अगर मैं बात करूं, this says to expose the deficiency in the study of Earth compared to the study of space. Okay, deficiency in the study of Earth. किसने चैट में लिखा है? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? यस सर, बीच बीच में काफी ब्रेक हो रहा है। अभी ठीक है क्या? हाँ अभी ठीक है, बीच बीच में होता है। मे बी हो सकता है वो, अगर माइक नीचे जाता हो तो मे बी। अभी क्लियर है ना? यस सर। ठीक
ठीक है। इसके बाद फिर से मैं तुम लोगों को ये दूंगा, तब तक मैं एक बार और सेटिंग्स चेंज कर दूंगा। टू एक्सपोज द डेफिशिएंसी इन द स्टडी ऑफ अर्थ कंपेयर्ड टू द स्टडी ऑफ स्पेस, राइट? लेट्स सी कि are we trying to make a comparison between earth and space? Not sure, but I'll have to keep it क्योंकि ये दोनों चीजों से related है। To point out that plate tectonics was discovered comparatively recently, 1969, etc. Time zone he wants to talk. To stress the prevalent tension between geology and cosmology, no. This will not be my essence. Why? Just because it has been discussed at last somewhere कि हाँ अभी के recent studies जो है, again जब मैं इस चीज को मार्क कर रहा हूं टू स्ट्रेस द प्रीवेलेंट टेंशन, कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, तो आई हैव टू चेक वंस कि हाँ whether this line their ardent adherence to such theory exposes a basic tension in the study of earth, whether it can be understood like the cosmos or not something on that front, राइट? तो यहाँ पे मेरे को मार्क करने से पहले एक बार जज करना पड़ेगा कि whether it is correct, whether it is not correct. But Apollo program, when I am talking about the Apollo program, Swasti, you marked option C. Apollo program का ये इंटेंशन नहीं था टेंशन के बारे में बात करने की. There were many studies, उसके अकॉर्डिंग ही is trying to come to that conclusion. Right, Swasti? So we are practically talking only about our major focus is Apollo program अभी इस क्वेश्चन में. That's why option C won't be my answer. मैं समझ रहा हूँ कहाँ से तुम्हारा आंसर आ रहा है, but you have to judge in a particular way. To highlight the preference given to studies, space studies over geology. Again, I am not trying to talk about which preference I have to give, which preference I don't have to give. Right. Now I am left with only two options: to point out that plate tectonics was discovered comparatively, to expose the deficiency in the study of Earth compared to the study of space. Right. So what's my intention when I discussed that? What my intention was? इंटेंशन वाज टू डिस्कस अबाउट द स्टडीज ओनली. सारी चीजें जो वो डिस्कस करता जा रहा है ना, ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट, इवन व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द अपोलो प्रोग्राम, वहां पे उसका मेजर फोकस क्या है कि इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है उन चीजों के बारे में, राइट? तो मेरा फोकस जो है ना वो स्टडीज अबाउट दीज माउंटेन्स एंड ऑल है, और उसी को मैं कन्वे भी करना चाह रहा हूँ. इट्स नॉट अबाउट टू शोकेस कि वेदर दिस अपोलो प्रोग्राम इज रिसेंटली लॉन्च्ड और नॉट. My point of conversation will always revolve towards the studies, towards our understanding, right? So that's why this option will be eliminated on that basis. This option will be eliminated on that basis. कि my major focus is not to talk about कि plate tectonics recently discover हुआ या फिर नहीं हुआ. ये सारी चीजें मेरी मेजर फोकस इंटेंशन नहीं है. मेरा इंटेंशन इवन व्हेन आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट द अपोलो प्रोग्राम, माय मेजर फोकस इज टू शोकेस कि भाई स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं whether that is quite understandable or not, right? So that's why option A should be more preferable in comparison to option B. If you have any doubts, please ask. हाँ, yes. Sir, हाँ. but यहाँ पे एकदम pinpointed है, where it is mentioned about Apollo program, it is very much pinpointed कि उसके comparison में जो plate tectonics आए थे वो काफी later on आए हैं. नहीं So देखो, shouldn't मतलब no, आई एम टॉकिंग अबाउट इट, है ना? यहाँ पे देखो, जियोडायनेमिक्स हैड बीन स्टक विद दीज थ्योरीज इन द 19th century. द साइंटिफिक पेपर दैट स्पार्क्ड द मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक रिवॉल्यूशन एंड अंडरस्टेटेड 3-page आर्टिकल इन दिस एंड दिस एंड दिस, राइट? तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन क्या बोल रहा है? देखो तुम्हारा एवरीथिंग इज काइंड ऑफ फोकस टुवर्ड्स की व्हाट यू वांट टू कन्वे, ठीक है? तो तुम वो पैराग्राफ जो रीड कर रही हो, व्हाट यू वांट टू कन्वे फ्रॉम दैट पैराग्राफ, अगेन यू वांट टू कन्वे योर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, है ना? और यहां तुम ये कंपेयर नहीं कर रही हो कि भाई जियोडायनेमिक्स और दैट अंडरस्टैंडिंग दैट बर्नेट सेड वो बहुत पहले आया था, ये अभी आया है. तो वी आर नॉट ट्राइंग टू सिग्निफिकेंटली शोकेस कि हाँ विच इज अर्लियर रिलीज्ड, विच इज लेटर रिलीज्ड. हम लोग उन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं कर रहे हैं. हम लोग वो उस चीज को नोटिफाई भी कर रहे हैं, तो बस इसीलिए टू शोकेस कि भाई ये स्टडी तो अभी की है. तो मेजर फोकस हमारा स्टडीज पे ही है, नॉट ऑन दिस डिस्कवरी कि हाँ ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है. गॉट इट? okay. Yeah. So that's why option A should be the correct answer.
सॉर्टेड. लेट्स मूव टू द अनदर आरसी. एक चीज इसमें मैं करना चाह रहा हूँ, वेट फॉर इट, है ना. जस्ट सी द ग्रुप अगेन. व्हाट्सएप ग्रुप. मैं इसमें तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ. I have shared it in group. Just read that out. Again, it's 11:43. We'll start sharp at 11:49.
Once done, type a D. Last 2 minutes, guys. हाँ. Okay. Okay, Shaunak. Okay, Ashutosh. Okay, Kartike. Okay, Kanchan. Okay, Maitri. Perfect, Anurag. Okay, Nitesh. Last 15 seconds. If you want to wrap up fast. मेरी आवाज अभी क्लियर होगी, राइट? ब्रेक नहीं आ रहा ना? नो सर, बहुत अच्छा। एक्चुअली बारिश भी हो रही है बहुत तेज, तो मे भी हो सकता है उस कारण से कभी कभी ब्रेक डाउन हो रहा हो. चलो, स्टॉप 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 स्टॉप. कार्तिकेय, प्लीज अनम्यूट. Yes, साकिब. sir. अच्छा, कार्तिकेय. हाँ, समराइज दिस इन 2 sentences. सर ऑथर कहना चाहता है कि इंग्लिश. अच्छा ओके सर ऑथर वांट टू से दैट इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द theories of Rubin and White we should also look forward for the alternative ideas like the acceleration and mass relation with the gravity. ओके. साकिब, यस सर. समराइज दिस इन 2 sentences. सर, इट इज ऑल
passage is all about galaxies and cosmos, and also there are different authors, different scientists have given their speculation and into that, and then it is finally concluded by the speed, basically speed, how our galaxy is speeding up, and the reason and the talks which talks around that, including dark Okay, done, done, matter done, and done, all. done, done, done. Kanchan? Kanchan? So there are Yeah. seven passages we are studying about the galaxy. So there are two astronomers who have provided different studies, but related to that particular subject, we have another solution by the third astronomer who has provided the solution in the last paragraph. Sanskriti, last one. So the author begins with the observations of Rubin Mhm. and how she comes to two different notions that whether there is a strong gravitational pull which works differently outside Earth on galaxy level, and first one is that there is some kind of matter present which is holding the whole galaxies together. Upon these two notions, further another scientist, White, has developed his hypothesis as well, and then further Stop. I got it. किसी ने भी डार्क there were मैटर a के few बारे में बात, points आई जहाँ गॉट पे इट, संस्कृति, आई गॉट इट, स्टॉप. किसी ने भी डार्क मैटर पे बात नहीं करा, किसी ने भी नहीं. चलो, let's see. In 1969, the American astronomer Vera Rubin puzzled over her observations of the sprawling Andromeda galaxy, the Milky Way's biggest neighbor, while mapping out the rotating spiral arms of stars. Now, see one thing, guys, है ना? We have discussed two RCs, both were on the scientific domain. You know why? Because there are only two preferred domains that you will be seeing in the recent times that CAT and JAT have preferred. Right. The first one is scientific domain conversations or articles. The second one is humanity based. Humanity based में दोनों चीजें आ जाती है, psychological और philosophical. So major concern economy के भी कुछ RCs आते हैं. We'll be covering the economic RCs too in the significant classes, right? But अभी मेरा major intention क्या था ना कि जो majority of the focus अभी रहता है ना हमारा CAT में और JAT में, वो तुम्हारे दो ही sections पे रहता है. One is your humanity, second is your science and technology, right? I guess my voice will be breaking. मेरे वॉइस ब्रेक कर रहा होगा, राइट? मेरी वॉइस ब्रेक कर रही थी क्या बीच में? क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये दिखा रहा था. हाँ, आई नो. मेरे को इंटरनेट, अरे इट्स रेनिंग वेरी हेवीली एट दिस प्लेस, सो द वाईफाई माइट नॉट बी वर्किंग दैट गुड, बट अभी क्लियर है? क्योंकि अभी मेरे को साउंड ठीक दिख रहा है, तो अभी क्लियर है या? हाँ, वो मेरे को दिख जाता है जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरे स्क्रीन पे ही आ जाता है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. आई नो दैट, है ना? तो इट्स रेनिंग क्वाइट हेवीली गई, सो उसमें मैं इसी कारण से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. बट लेट्स सी, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इज कि दिस इज वन ऑफ द प्रेफर्ड सेगमेंट इन कैट, दैट्स इट, है ना? अभी इन रिसेंट टाइम्स, इन द लास्ट 4 to 5 years, इफ यू विल बी सीइंग द पेपर, तो ह्यूमैनिटी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दो सेक्शंस मेजर फोकस में रहते हैं, इवन इन योर मॉक्स, राइट? So in 1969, the American astronomer, this guy puzzled over her observations of the sprawling Andromeda galaxy, the Milky Way's biggest neighbor, while mapping out the rotating spiral arms of stars through spectra carefully measured at two different observatories. She had noticed that the star in galaxy's outskirts seemed to be orbiting far too fast, so fast as to leave Andromeda and fling out into the heavens beyond, which they never did. That means we are trying to talk about two galaxies. One is my Andromeda galaxy, that is the neighbor of Milky Way. What she has observed that the spiral movements are very fast in the outskirts. And once you know, if you would have seen mission on Mars and something, you must have seen if it will be moving more than the speed, desired speed, it will move the, or it will leave the orbit. That's what it is saying here. They are moving too so fast that it might fling into the heaven beyond, leaving that orbit. But simultaneously, this is not happening. So in the next things out, she might be talking about the rational ski. Even if the movement is so fast, why is this not happening?
And along with that, when my eye caught this word now, right, I was pretty sure, because when I read the sentences, I keep looking down as well as up as well as sideways, so that some connecting keywords I might get. If you will be reading somewhere any articles ki how to read fast, the first thing they will see is ki enhance your eye span. It will make you an efficient reader. ठीक है हाँ, your concentration should be only on those sentences that you are reading, but simultaneously your eye span should be broader. That's how you capture the essence more efficiently. So when I'm talking about this, what it says is Rubin's research, which he expanded to dozens of other spiral galaxies, led to a dramatic dilemma. Either there was much more matter out there, hidden from sight, but holding the galaxies together with its gravitational pull, or gravity somehow works very differently on the vast scale of a galaxy than scientists previously thought. Now we are talking about the dilemma. What that dilemma is, and where this dilemma is coming from. This dilemma is coming from our perception that if it is moving too fast, it should leave the orbit and go into the heavens somewhere else, but it is not happening. So that's why there is something that we are missing. And there comes the dilemma from ki what is that? Is it the gravitational pull? Right, just because of the matter. See, F equals to mass into acceleration, we all know that 10th class है ना. You can correlate with it. Obviously we are not going beyond the scope of the passage, but you can correlate with it कि F equals to m into acceleration, right? So if there is way too mass है ना, तो the force that we are interpreting कि हाँ this might be the force, अगर हम लोग mass को calculate सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो we cannot exactly calculate the exact force. So this might be one reason, or the another reason that he is talking about, it works in a very different domain that we don't even think of. So this is the dilemma ki hai kya actually mein. Her influential discovery never earned Rubin a Nobel Prize, but scientists began to look for signs of dark matter everywhere among the largest structure in the galaxies in the universe. By the 1970s, this guy at the University of this argued that the conglomeration of galaxies could be explained using a model in which most of the universe matter is dark, far outweighing all the stars combined. Now we have introduced one new domain, and that is dark matter. What that dark matter is, something that is not explained, something that is not considered in the mass of matter, right? So another thing that is given is कि उसने बहुत सारी चीजें की, उसको नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, but other scientists started thinking about it कि what that dark matter is. I'm sorry. In the following decade, White and others built on that research by simulating the dynamics of hypothetical dark matter particles on the not so user-friendly computers of the day. अब देखो guys, होता क्या है? When we are reading the RCs now, what we have to think of, we are trying to come to some sort of conclusion, right? है ना? कि ये dilemma है तो dilemma क्यों है? I want to get that answer. But if you read this out, ये सिर्फ और सिर्फ it has kept the talking about the boundary peripheral. It has not talked about the thing that you want to talk. Rubin को Nobel Prize नहीं मिला, started thinking about dark matter. Following decades, other scientists also talking about this hypothetical dark matter, etc., etc. So the essence from here is nothing. Just कि we started talking about dark matter. तो पूरा पैराग्राफ 6 लाइंस का पैराग्राफ, और कंक्लूजन क्या निकला कि we started talking about dark matter that might be hypothetical. Many scientists started talking about it. That's it. ठीक है, तो these are the things that you have to keep in mind कि when you are reading the paragraph, just try to keep the essence out of that paragraph, extract the essence out of that paragraph. और यही चीज अभी अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी काम आई थी. If you remember कि what is the essence of that paragraph that I am talking about, right? Now let's move forward. But despite those advances, no one has ever directly detected a single particle of dark matter. भाई हम लोग बात तो कर रहे हैं, but अभी तक मेरे को मिला ही नहीं है. Physicists search for dark matter particles with powerful and sensitive tools like Antarctica, abandoned mines on other continents. They also try to produce such articles in particle accelerators. Nothing more bore fruit.
right? So we are typing, and that's why, see how it is connected with this keyword hypothetical dark matter. Whether it exists, whether it doesn't exist, we don't know, because in theory we are keeping it, but when I'm trying to take it into the practical instances, we are not getting that, because nothing is bearing fruit. Even we try to simulate the particle with the help of particle accelerators, we are not getting that dark matter. For a while, physicists hoped to find a theoretical type of matter called weakly interacting massive particles. Another thing from the dark matter. We are deviating from the dark matter, but they also remained undiscovered. तो अगेन द एसेंस, व्हाट्स द एसेंस, कि भाई हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत डिफरेंट वे में काम करता है, ये सारी चीजें होती है. देन देयर वाज सम हाइपोथेटिकल डार्क मैटर, दे इंटरप्रेटेड कि इट माइट बी द केस. दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट. The results were not fruitful. Then they came for with another interpretation that said there might be some weakly interacting massive particles. Again, that was not giving us any resultant, right? So the dilemma that was there in the second paragraph, that dilemma is still continued. We have not gotten to anything very significant, right? Now let's see. With the candidacy, all but dead dark matter is apparently the most ubiquitous thing physicists have never found. Therefore, it remains possible that there is no dark matter at all, which means that instead of huge amounts of hidden matter, some mysterious aspects of gravity could be warping the cosmos instead. अब वो लोग पहले क्या बोला कि भाई बहुत ज्यादा डार्क मैटर होगा जिस कारण से कि ग्रेविटी पुल कर रहा होगा उस तरह से. But now, due to those matters, it will be reacting in a different way. But जब इनको यहाँ से भी significant results नहीं मिला, then they came in, then the concept of gravity came into being again. क्योंकि in the second paragraph he has talked about two things, right? But holding the galaxies together with its gravitational pull somehow works very differently on the vast scale of a galaxy than scientists previously thought, right? तो यहाँ पे दो चीज थी, एक डार्क मैटर या फिर ग्रेविटी. तो डार्क मैटर से उनको कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिला, तो दे केम इनटू द कॉन्सेप्ट कि भाई ग्रेविटी दूसरे वियर्ड वे में काम करती होगी. The notion that gravity behaves differently on large scales has remained relegated to the fringe since Rubens and White heyday in the 1970s. Now see one thing, guys, if you are seeing me reading the RCs, you must have seen मेरा कहीं भी flow break नहीं होता है. यही चीज मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम पैराग्राफ्स को रिलेट करके पढ़ते जाओगे ना, तो मेनी ऑफ यू आर फेसिंग द डिफिकल्टी कि सर व्हाइल आई एम रीडिंग द आरसी माय फ्लो इज कंटिन्यूअसली गेटिंग ब्रोकन. अभी मेरे से तुम 50 बातें करवा लो बीच में, उसके बाद भी मेरा द कॉन्सेप्ट हैज बीन फिक्स्ड इन माय माइंड, द फ्लो हैज बीन क्रिएटेड, एंड वंस दैट फ्लो हैज बीन क्रिएटेड, तुम कुछ भी बात करो, कहीं भी तुम्हारा माइंड डेविएट हो, क्वेश्चंस पे जो चीजें भूलोगे नहीं. एंड दिस इज द एफिशिएंट वे टू रीड द आरसीज, right? So the notion that gravity behaves differently on large scales has remained relegated to the fringe since Rubens and Whitehead in 1970s. But now it's time to consider the possibility seriously. अभी तक क्या है? We are talking about only the hypothetical concepts कि maybe dark matter, maybe the WIMVP, etc., or maybe gravity. But now he's talking about कि now it's time to consider the possibility seriously. Scientists and research teams should be encouraged to pursue alternatives to dark matter. Regardless of who turns up to be right, such research on alternatives will ultimately help crystallize the demarcation between what we know and what we don't. पता तो चले कितना आता है मेरे को. Indeed, as early as in the 1980s, this physicist proposed that Isaac Newton's second law of motion, which describes how the gravitational force acting on an object varies with its acceleration and mass, changes ever so lightly. Again, Newton's second law of motion, जो मैं वहां बात कर रहा था, वो यहाँ पे आ गया, F equals to ma. है ना? So this guy proposed that Isaac Newton's second law of motion, which describes how gravitational force acting on an object varies with its acceleration, f is directly proportional to acceleration होता है. You all must be knowing that, है ना? With its acceleration and mass changes ever so lightly depending on the object's acceleration. It changes with acceleration. ठीक है, ये concept तो obviously understood है. Naturally, planets such as Neptune or Uranus orbiting our sun or stars orbiting close to the center of our galaxy do not display the difference.
but far in the outlying areas of the Milky Way, stars would feel a smaller gravitational pull than previously thought from the bulk of matter in the galaxy. राइट सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई हम लोग ऐसा ये करते हैं कि जब वो बहुत फास्ट इवॉल्व कर रहा है तो इट माइट गो आउट ऑफ द गैलेक्सी, बट what might be happening, they would feel a smaller gravitational pull than a previously thought from the bulk of matter in the galaxy. राइट जितना हम लोग सोच रहे हैं एंटिसिपेट कर रहे हैं उतना उनको ग्रेविटेशनल पुल नहीं मिल रहा होगा. Adjusting Newton's law could provide an explanation for the speed Rubins measured without needing to invoke dark matter. The author is saying we have to take into consideration the gravity wala cheez more appropriately in comparison to this dark matter. अगर हम लोग इस चीज को अच्छे से ले लिए तो we won't need to invoke the dark matter part at all. तो एसेंस वाज कि जितनी सारी चीजें हम लोगों ने बात करी, द फोर्सेस दैट दे आर गेटिंग समथिंग, व्हाट द ऑथर्स ओपिनियन एट द एंड केम कि हम लोगों को मे बी अगर हम लोग ये एक्सेलरेशन और ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट को ज्यादा सीरियसली लेते हैं तो हम लोग को डार्क मैटर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Sorted? Right? Let's move to the questions. Repeated है. इसकी जगह पे एक ऑप्शन दे दो, नन ऑफ दीज. ओके मैत्री, ओके शकीब, ओके अभिषेक, ओके वर्षित, ओके मानसी, ओके शुभाली, ओके कुणाल, ओके नितेश, ओके संस्कृति. इतने लोगों के आंसर्स आते हैं ना तो इट फील्स गुड यू नो. ओके सुनिधि, भले ही गलत है. मोस्ट ऑफ यू आर रॉन्ग. ओके फरजान, ओके स्मृति, ओके शैव्या, ओके कार्तिकेय. चलो देखते हैं, है ना. यहाँ पे दिया हुआ क्या है? वेट 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 नो वेट. अच्छा चलो मैं और 10 सेकंड दे रहा हूँ. इफ यू वांट टू रैप अप प्लीज रैप अप फास्ट, है ना. ओके विदिशा, अब रुक जाओ, अब कोई टाइप मत करना, ठीक है. It can be inferred from the observation made by Vera Rubin that a star at the edges of a galaxy. ठीक है, चलो वीरा रूबिन पे जाते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में उसने बोला था right. What it has been suggested, the American astronomer puzzled over or her observation at this the Milky Way while mapping out this spectra carefully measured at two observations. She noticed that outskirts seemed to be orbiting far too fast, so fast as to leave this, which they never did. Right? तो यहां से एक चीज जो है, it can be inferred from this by Vera Rubin that a star at the edges of a galaxy is likely to leave orbit sooner or later. Right? That means is likely to leave orbit sooner or later का क्या मतलब हुआ कि it might leave the orbit, right? But simultaneously she is saying it is not the case. राइट ऐसा लग रहा था कि हाँ इसके कारण वो छोड़ सकता है ऑर्बिट को, बट इट इज नॉट द केस.
So this inference that we are doing is not correct, right? Is likely to leave orbit sooner or later. Observation क्या था? Observation ये नहीं है कि it is likely to leave the orbit sooner or later. The observation is कि ऐसा probable है कि मतलब they will leave the orbit but they don't. तो observation है कि वो orbit नहीं छोड़ते हैं, right? So that's why option A is wrong. Is held in its orbit by dark matter, right? Now see, again, this is the speculation. They started thinking on that speculation, but simultaneously in the paragraph we all read that this speculation was wrong. Even dark matter might not exist at its first place. डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है भी कि है कि नहीं है ये मेरे को पता ही नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन में सर्टेनिटी के साथ ये ऐसा कैसे बोला जा सकता है भाई? क्योंकि यहाँ पे व्हेन यू विल बी रीडिंग दिस पैराग्राफ है ना, बट डिस्पाइट दोज नो वन हैज एवर डायरेक्टली डिपिक्टेड अ सिंगल पार्टिकल ऑफ डार्क मैटर. तो नो वन हैज, दैट मींस दिस साइंटिस्ट वीरा र्यूबिन आल्सो डिडंट. And if Vera Rubin didn't get a single particle of dark matter, how can she conclude that it is held in its orbit by dark matter? This also cannot be inferred. Shows that our measurement of speed on large scales may be flawed. Our measurement of speeds on large scales may be flawed. No, the concept is not flawed. This concept, it is not saying that this concept is flawed. Either there was much more matter out there hidden from sight, or gravity somehow works very differently. So we haven't talked about anywhere, we didn't talk about ki the way we are calculating, the way we are measuring, that's flawed. There might be something we are not counting, or it works in a very different way. That doesn't mean that whatever we are doing that is wrong, that has flaw embedded in it. It's not the case, right? So on that basis, again, option C will be eliminated. So option D will be the correct answer. सर क्वेश्चन है मुझे इस पे डाउट है हाँ हाँ, बोलो बोलो. सर यहाँ पे पहला बात तो है यहाँ पे मे बी फ्लॉ लिखा हुआ है और एट द एंड ऑफ द पैसेज वहाँ पे लिखा है कि इफ वी एडजस्ट न्यूटन्स कैलकुलेशंस लाइक सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम कैलकुलेशन एडजस्ट करें डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज वो एकदम लास्ट लाइक इट्स हाँ हाँ, मैं एट द एज ऑफ द गैलेक्सी एंड समथिंग लाइक दैट इन द फार आउटलाइन मैं आई समझ गेस ऑफ गया, द मिल्की वे. मैं समझ गया तेरा कहाँ से आ रहा है. हाँ, अब बताओ. But far in the outlying areas of Milky Way, stars would feel a smaller gravitational pull than previously thought from the bulk of matter. Adjusting Newton's law could provide an explanation for the speed Rubin's measured without needing to invoke dark matter, right? First thing, could provide an explanation. If it could, then we can say that it is flawed, or it might be flawed. If it is not proved yet, how can we say that it might be flawed? हाँ सर, लेकिन वही क्वेश्चन मतलब आंसर चॉइसेस में भी वही है ना, मतलब डायरेक्टली बोला नहीं है कि फ्लॉड है. ये क्या बोला है कि लिखा है मे बी फ्लॉड. नहीं, सोच दैट आवर मेजरमेंट ऑफ स्पीड मे बी फ्लॉड, है ना? कि यहाँ पे क्या है इंटेंशन, देखो अगेन अंडरस्टैंड द टोन, ठीक है? यहाँ पे टोन क्या बोल रहा है कि इट माइट बी फ्लॉड, ठीक है? तो इसका एंटिसिपेशन है कि अगर हम लोग इसको सही कर लेते हैं तो वी माइट गेट द रिजल्ट, राइट? ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ वी आर, यहाँ क्या बोल रहा है कि एडजस्टिंग लॉ कुड प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द स्पीड र्यूबिन मेजर्ड, ठीक है? तो ये किस चीज के बारे में है? इट इज प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर द स्पीड र्यूबिन मेजर्ड, कि र्यूबिन ने उस तरह से जो मेजरमेंट किया है जिसके कारण सी एंटिसिपेटेड कि इट शुड गो आउट ऑफ द ऑर्बिट, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है मेरे को बच्चा, not that whether that calculation is flawed or not. Are you getting it? Yes. Yes. Right. If sorted, type S, guys, else if you have any doubts you can ask. Most of you were wrong. Only Saqib, I guess, was right. Only one or two guys. Mansi, कैसी है बेटा तू? Seeing you after long. सर यहाँ पे जो रूबिन का हम लोग को क्वेश्चन
इन्फ्रेंस है ना कि मतलब रूपेन ने एक इसमें ऑब्जर्वेशंस करे, हम्म 2 ऑब्जर्वेशंस थे, हम्म उसके बाद दोनों में से एक पे लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करा, तो हम लोग को अल्टीमेटली सजेस्ट करे कि दूसरे पे भी देखना चाहिए। यस तो यहाँ परफेक्ट। पे हम लोग यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन हम लोग को सिर्फ रूबिन के ऑब्जर्वेशन से हम लोग अब देखो क्या इसमें तुम्हारा एक इन्फरेंस कहाँ गलत है मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारा इन्फरेंस यहाँ पे कहाँ गलत है वो मैं तुमको बताता हूँ। ये भी नहीं बोल रहा है कि मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन गलत था। ये हाँ इस चीज पे बात ही नहीं कर रहा है कि मेरा डार्क मैटर वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। लास्ट में भी यही यही बोल रहा है कि अगर हम लोग F इक्वल्स टू ma वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो हो सकता है हमको डार्क मैटर वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं आना पड़े, और डार्क मैटर अभी तक मिला नहीं है। लेकिन नो वेयर ही हैज मेंशन कि वो डार्क मैटर वाला कॉन्सेप्ट फ्लॉड है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे भी जो तुम्हारा इन्फ्रेंस था वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। अब बताओ और क्या डाउट है तुम्हारा? हाँ, ठीक है साउंड। गॉट इट? हाँ हाँ ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, this was a good question. I liked this question, you know. Why I liked this question कि सबके ABC 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 आए जा रहे थे। चल, let's move to the next question. This is something that you can do. Okay, Varshit. Okay, Subhali. Okay, Farjan. Okay, Shakib. Okay, Vidisha. Okay, Kunal. ओके मैत्री। यार मैंने सोचा था कि अपने 6 आरसी हो जाएंगे, बट अभी 2 घंटा के अराउंड हो गया, आपने दूसरे आरसी पे ही है। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ। एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी अप फॉर की 10:30 to 1:30, 2:30 to 5:30 और 9:30 to 12 या 10 to 12? How many of you will be up for it? 8 hour session or 8.5 hour session? How many of you will be up? I know I'll be ruining your Sunday, but accordingly I'll have to plan, क्योंकि मेरा अभी का जो प्लानिंग था ना कि अपन 6 आरसी जब भी कर लेंगे और 30 से 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस के आसपास, 40 नहीं हो पाता मेरे को पता था, बट 30 क्वेश्चंस के आसपास अपन इसमें कर लेंगे। लेकिन अभी अपना दूसरा ही आरसी, एक और आरसी अपन मैक्सिमम खींच पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर सेकंड वाले में जो मेरा 6 आरसी का प्रोग्राम था ना वो मेरा पूरा हो जाए, और रात में फिर अपन वीए कर ले। तो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी अप फॉर इट? ओके कुणाल। ओके संस्कृति, पहले इसका बता दो। कल एक क्लास में नहीं रख सकता, कल तुम लोगों का क्वांट का अकॉर्डिंगली सेशन चलेगा, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द अलजेब्रा 2। पहले 1 मिनट गाइस, इस क्वेश्चन को रुक जाओ, पहले ये बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी अप फॉर 10:30 to 1:30, 2:30 to 5:30? कुणाल तू 4:30 to 5:30 एक तेरा छूटेगा तो वो तू देख सकता है, एंड देन 10 to 12। ओके, अगर प्रॉब्लम है तो खुल के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट या अगर तुम लोग अप फॉर इट ना, तो वी कैन डू दैट अकॉर्डिंगली। तो मैं इसके बाद 2:30 to 5:30 में भी मैं आरसी ही कर लूंगा, एल्स मेरे को वीए करना पड़ेगा। ओके रूपाली, चेष्टा स्कूल, कुणाली स्कूल है ना, सुनिधि स्कूल, सुभाली स्कूल, 5 लोग, नीतीश स्कूल। टाइमिंग मैंने बता दिया है। अदर्स, सेविया स्कूल,
planned mock tonight. कंचन प्लीज बेटा 12 बजे के बाद दे दो ना मॉक प्लीज. दीप्ति स्कूल, कार्तिकेय स्कूल, स्वस्ति स्कूल. चलो ठीक है, तो फिर मैं इसी तरह से प्लान कर रहा हूँ, है ना, कि इसके बाद अपन एक और आरसी करेंगे, फिर 2:30 to 5:30 अपन 3 आरसीज करेंगे, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बेस्ड और ह्यूमैनिटी बेस्ड, एंड देन एट नाइट वी विल बी 10 to 12 वी विल बी डूइंग द ये. ठीक है, वीए कर लेंगे, है ना. चल सॉर्टेड है फिर. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, है ना. दो इट विल बी एग्जॉस्टिव फॉर मी टू, क्योंकि कल भी मैं मेरा लगातार मतलब 9 साढ़े 9 घंटे के आसपास का सेशन चला था एनालिसिस के साथ. आज भी सारा रहेगा, बट दैट्स ओके टू मी, दैट्स नॉट एन इशू, है ना. चलो लेट्स डू द क्वेश्चन. आते हैं बैक टू द क्वेश्चन. पूरा फ्लो मैंने बिगाड़ दिया तुम लोगों का इस आरसी का. आई एम सॉरी. ओके स्वस्ति, ओके रूपाली, ओके नितेश, ओके अभिषेक. लेकिन ओके चलो ठीक है, मैं देखता हूँ. ओके मानसी, ओके कार्तिकेय, ठीक है. वेट, नाउ वेट. Which of the following best describes Vera Rubin's work? Connection unstable, voice breaking. No, sir. अभी ठीक होगा, वो बीच में आया था मेरे पास मैसेज. Which of the following best describes Vera Rubin's work as an astronomer? ठीक है, वीरा रूबिन का वर्क क्या था, सबसे पहले ये समझ लो कि सी एंटिसिपेटेड कि जिस तरह से स्पीड में चल रहा है उससे ग्रेविटी से बाहर चले जाना चाहिए, बट वो जाता नहीं है, राइट. Discovered inconsistencies in cosmic phenomena. No, I'm not too much careful about all the cosmic phenomena. I am only focused towards कि ये पुल से बाहर नहीं जाना चाहिए जो नहीं जा रहा है. So ये बहुत ज्यादा generic हो गया. That's not the intention of that. So A will be eliminated. Formulated a compelling hypothesis about the universe at large scales. There is no formulation of any compelling hypothesis. ठीक है, it has not been compelled, right, कि the hypothesis is there at large scales. ऐसा कुछ भी हम लोग कोई भी चीज फॉर्मुलेट नहीं किया है. एवरीथिंग इज बीइंग एंटिसिपेटेड अभी के लिए. सो ऑप्शन बी विल बी एलिमिनेटेड. प्रॉब्लम आती है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में. Indicated the need for a refined theory of gravitation, research into the existence of force beyond the known forces of the universe. Cool, right? Cool. Sorted. Discovered an anomaly in the orbit of stars as predicted by gravity. यहाँ पे देखो. This and thus, while mapping out the rotating spiral arms of stars through spectra carefully measured at 2 different observatories, she had done this and this. So there are 2 things. First, she is majorly focused upon stars, and that's why we eliminated the cosmic wala portion too. Cosmic phenomena. पहला चीज, राइट. दूसरी चीज है कि बेस्ट डिस्क्राइब्स वीरा रूबिन्स वर्क एज एन एस्ट्रोनॉमर. ये वीरा रूबिन का वर्क के बारे में मैं पूछ रहा हूँ. दिस इज सेइंग मी कि इंडिकेटेड द नीड फॉर अ रिफाइंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, रिसर्च इनटू द एग्जिस्टेंस. तो ये जो है ना नीड फॉर रिफाइंड थ्योरी, दिस इज एन अमेलगमेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द साइंटिस्ट्स और cosmologists that we have observed. They said कि हाँ डार्क मैटर भी सही नहीं हो सकता, all these things are not सही. तो अगर मैं कंक्लूजन में आता हूँ तो this option would have been validated more aptly. But when I am focusing only on Vera Rubin's work, she was majorly focused towards stars, right? And she said कि जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है.
तो देयर माइट बी समथिंग एल्स. ठीक है, तो इंडिकेटेड द नीड फॉर अ रिफाइंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, रिसर्च इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स बियॉन्ड द नोन फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स. यस, perfectly fine, ये मेरे को सही है. Discovered an anomaly in the orbit of stars as predicted by gravity. ये क्या बोल रहा है कि जो जिस तरह से एंटिसिपेटेड था कि ऑर्बिट ऑफ स्टार्स ऐसा होना चाहिए, उससे डिफरेंट है. देयर इज एन एनोमैली बिटवीन दैट. तो जैसा अपना प्रेडिक्शन था उसके बियॉन्ड कॉन्सेप्ट है. तो उसका वर्क तो मेजरली यही बोल रहा है ना कि जो ग्रेविटेशन का सोचता उससे कहीं और स्टार्स का रिवॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट वे में होता है. तो जैसा हमारे साइड से था, जैसा एक्चुअल में है, इन दोनों में देयर इज एन एनोमैली. और ये जो नीड फॉर अ रिफाइंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन रिसर्च है, दिस इज द एमलगमेशन ऑफ द वर्क ऑफ ऑल द साइंटिस्ट. कि भाई डार्क मैटर भी सही नहीं है, द कॉन्सेप्ट्स आर हाइपोथेटिकल एक्स वाई एंड जेड, सो देयर इज अ नीड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ नीड फॉर रिफाइंड थ्योरी. So when we are majorly focused towards Vera Rubin's work, option D is aptly fitting it out, not option C. And that was the biggest trap most of you fell for. Sorted? Any doubts you might ask? Why para 2 can't be considered for option C? No, you can. You can, कार्तिकेय. बताओ तुम्हारी कंफ्यूजन क्या है, बताओ बताओ. Led to dramatic dilemma even if you are considering Rubin's research from the second paragraph too, which he expanded to dozens of other spiral galaxies, led to a dramatic dilemma. Either there was much more matter out there hidden from sight but holding the galaxy together with its gravitational pull, or gravity somehow works very differently on large scale than scientists previously thought. So refined theory, if you are talking about the refined theory, you have to take into consideration all the scientists. We are majorly focused towards Vera Rubin's work. And that's why Vera Rubin का जो work है वो second paragraph को भी तो consider करता है. तो the way she was thinking and the way it acts, they are different. So there is an anomaly between them. That aptly justifies that. Got it, Kartikeya? Yeah. Others सबके आंसर लगभग गलत ही थे. तो जिनके कंपेलिंग हाइपोथेसिस में जो 2 ऑप्शंस बोले थे, क्या बच्चा, मैं समझा नहीं. यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, रूपाली. Sir, in this second paragraph, say Rubin's research can be explained in 2 ways. Either there is a dark matter or there is difference in how the gravity works and versus how we think gravity works. Right? These are the 2 hypotheses in the end about Rubin's research. So I think, and second option also talks about the same thing. Wait. You are getting confused. Yeah. तुम्हारा र्यूबिन का वर्क क्या है कि देयर इज अ डिलेमा. इधर देयर वाज मच मोर मैटर आउट देयर hidden from sight but holding the galaxies together, or gravity somehow works very differently. ये र्यूबिन का काम है. Her influential discovery never earned her, but scientists began to look for signs of dark matter. तो the dark matter का concept that you are introducing, ये दूसरे scientists का काम है. You got it? यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट दैट सी हैज पुट इन इज ओनली सिंपल कि भाई जिस तरह से हम सोच रहे थे उस तरह से ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं कर रहा है, या ग्रेविटी कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन में काम करती है. ये उसका काम है बस. ओके सर, गॉट इट? यस सर. बट बताओ. टू दिस ये चीज तो हो गई ना कि आफ्टर हर फाइंडिंग दिस, तो एक हाइपोथेसिस वहां पे इंट्रोड्यूस हो गई डार्क मैटर की, विच लेटर ऑन अदर पीपल वर्कड अपॉन एंड डिड नॉट वर्क आउट. बट वो इंट्रोडक्शन जो हुआ था दैट केम फ्रॉम रूबिन्स वर्क. सुनो, पहले एक चीज बात सुनो. यहाँ के बाद जो भी चीजें थी, र्यूबिन्स वर्क तुम्हारा यहाँ तक खत्म होता है. डार्क मैटर वाला कॉन्सेप्ट, अदर साइंटिस्ट, र्यूबिन का कॉन्सेप्ट ये था कि दीज थिंग्स माइट वर्क इन अ वेरी डिफरेंट वे. She didn't introduce the dark matter का concept. Science आज. हाँ बोलो. ये वाला point he led to dramatic dilemma. Either there was much more matter out there. Much more matter definitely goes to dark matter point, ना? या ठीक है.
तो अब देखो, दैट इज चलो द तुम्हारे, हाइपोथेसिस जो आई। ठीक है, तुम्हारे ऑप्शन पे आते हैं, है ना? वेट, देखो, तुम्हारा ये है, फॉर्मुलेटेड अ कंपेलिंग हाइपोथेसिस अबाउट द यूनिवर्स एट लार्ज स्केल्स। तुम्हारे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, राइट? करेक्ट। ठीक है, अब देखो, बेस्ट डिस्क्राइब्स वीरा रूबिन्स वर्क एज एन एस्ट्रोनॉमर। ठीक, व्हेन शी वाज एन एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, शी said कि the matter is not working in the gravitational pull is not working in a way that we anticipated. That's it. क्लियर है, राइट? अब यहां पे वीरा रूबिन्स का वर्क जो है, डिड इट फॉर्मुलेट अ कंपेलिंग हाइपोथेसिस? नो। वीरा रूबिन का वर्क सेड कि हाँ, देयर इज समथिंग एल्स, राइट? सम अदर मैटर्स माइट बी देयर, बट दिस कंपेलिंग हाइपोथेसिस अबाउट द यूनिवर्स एट लार्ज स्केल, ये हाइपोथेसिस आना शुरू हुआ व्हेन शी सेड कि भाई there might be something else. She didn't come to any sort of conclusion. She said that there might be something else. When she gave this concept, the other scientists started working towards that domain, not she. So if I'm saying due to the Rubin's work, it was formulated, no. She only gave a concept. The work was formulated by other scientists, not Vera Rubin. ओके, ठीक। Clear? Hmm. Yeah. Anyone else who has any other doubts? Chalo, let's move to the next question then. Okay, Varshit. Okay, Sanskriti. Guys, those who are sitting idle, please attempt, वरना क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अनुराग, अभी तक सारा कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है। एक और चीज समझ में आ रही है तेरे को, अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि तेरे साथ वो दिक्कत आ रही थी। ठीक है, सॉर्टेड। ओके, फरजान के, अभिषेक, स्मृति, सूर्यकांत। जब भी मैं सोचता हूँ ना कि तुम लोग इस ट्रैप में फंस सकते हो, तुम लोग फंस जाते हो। मोस्ट ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, मेनी ऑफ यू। None of you marked option A. Oh, Nitesh, good job. Very good job. Okay, Maitri. नहीं. Now see guys, I'm telling you one thing.
Anyone else who is trying to answer? नितेश तू कितना बड़ा बेवकूफ है कि जब पूरा पैसेज बोल रहा है कि डार्क मैटर माइट नॉट बी एग्जिस्टिंग, तू बोल रहा है इट विल्स ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल पर यूनिट। अंडरस्टैंडिंग बढ़ा या फिर लिसन टू एवरी सिंगल सेंटेंसेस वी आर डिसिफरिंग, है ना। पूरे पैसेज में वी हैव टॉक कि डार्क मैटर माइट नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, किसी ने आज तक देखा नहीं है, एंड यू आर सेइंग कि इट विल्स ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल। क्या बकवास है। The strength of gravitational pull doesn't always correspond to the mass of the body. Strength of gravitational pull doesn't always correspond to the mass of the body. भाई वो बोल रहे हैं कि हम लोग लास्ट में वो बोल रहे हैं, राइट, कि if Newton's law is formulated in a is followed in a better way, we might not need of invoking that dark matter. That means he is insisting on that Newton's law, right? And Newton's law is saying that only कि F is directly proportional to m and a, राइट? नहीं भी पता है तो भी पैसेज बोल चुका है मेरे को, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। Which describes how the gravitational force acting on the object varies with its acceleration and mass, changes ever so slightly depending on the object's acceleration, right? So that means F is directly proportional to ये A जो है ये applicable है, तो ये पॉजिटिव सेंस में बोला जा रहा है कि हाँ इट इज एप्लीकेबल, ये बोल रहा है डजंट ऑलवेज करेस्पॉन्ड। मैं इस चीज के निगेटिविटी में तो बात ही नहीं किया हूं, तो हाउ कैन दिस बी माय आंसर? जब मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं पॉजिटिव डोमेन में जाके बात कर रहा हूं कि हाँ दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल, तो मैं निगेटिव में कहीं बात, जब व्हेन आई डिडंट डिस्कस कि इट माइट बी एप्लीकेबल, माइट नॉट बी एप्लीकेबल, आई डिडंट डिस्कस अबाउट दैट सिनेरियो, तो हाउ कैन दिस बी ट्रू? सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी एलिमिनेटेड, राइट? C says a modified theory of gravity could possibly dispense with the concept of dark matter, right? So modified theory of gravity could possibly dispense with the concept of dark matter. Conclusion, guys, remember the conclusion that we discussed. Adjusting Newton's law could provide an acceleration for the speed Rubin measured without needing to invoke dark matter. So if we are delving into this concept a bit further, we don't need to this out. This is what the option is also saying. Ki modified theory could possibly dispense with that concept of dark matter. It will eliminate the dark matter ka concept, and author is saying ki we don't need to invoke if we are doing it in a different way, a slight modified way. So obviously option C might be justified, might be, not sure. Let me read option D first, right? A, B and C में तो C सबसे बेस्ट है अभी तक. Universities and grant committees do not encourage completely out of scope. So option C should be the answer. And this was an easy question. I was knowing that some of you might fall in the trap of B and you fell for that. But भाई जब हम पॉजिटिव में बात कर रहे हैं तो निगेटिव में क्यों बात कर रहे हो? Right? Let's move to the next question. हाँ मानसी सही था तुम्हारा. ओके वर्षित.
Okay, Fajan. No, this is not that difficult. Okay, Surikant. Okay, Kanchan. Okay, Saibya. Okay, Sonak. Okay, Rupali. Oh my God. Many of you have changed the answer. ऐसा क्या हो गया भाई, धर्म परिवर्तन कर लिए? क्या आसान क्वेश्चन है यार, तुम लोग कितना ओवर थिंक करते हो भाई यार. कीप इट सिंपल, सीधा आंसर दिख रहा है मेरे को. चलो देखते हैं, लेट्स सी. स्टॉप, अब कोई टाइप मत करना. ओके अभिषेक. ओके मानसी. ओके शुभाली. According to the passage, the weakly interacting massive particles were. Sorry. यहाँ था राइट. For a while, see, for a while, physicists hoped to find a theoretical type of matter called WIMPs, but they also remained undiscovered. Right? Now see one thing, but despite those advances, यहाँ पे कहाँ एक और चीज दी हुई थी. Just a second. Among the largest structure by the 1970s, the astrophysicist Simon White at this argued that the conglomeration could be explained using a model in which most of the universe matter is dark, far outweighs all the stars. In the following decade, White and the others built on that research of hypothetical dark matter particles on the not so user-friendly computers of the day. But despite those advances, nothing, उन लोगों को कुछ नहीं मिला, and they kept coming up with another thing, that is your WIMP. राइट. तो यहां से कॉन्सेप्ट जो है, दोज हु हैव मार्क्ड ऑप्शन बी, टेल मी वन थिंग कि वेयर इज इट मेंशन्ड दैट इट वाज इन वर्ड्स थ्योरी ओनली. अदर साइंटिस्ट्स आल्सो केप्ट कमिंग अप विद सम डिफरेंट थ्योरीज. तो ये WIMP वाइट के थ्योरी से नहीं आया है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है. राइट. For a while, physicists hoped to find a theoretical type of matter called WIMP, but they also remained undiscovered. White के theory से क्या आया है कि there is something that might be a substitute for this. WIMP की तो उस समय में उसने बात ही नहीं की थी. Right? The other physicists built on research that there is a hypothetical dark matter particle, and then other physicists came up with the concept of WIMP. So if I am saying ki White's theory mein this is there, that's a false representation of the fact, right? So option B is directly eliminated. Many of you have marked option B. Hypothesized to make up dark matter clearly mentioned है. तुम लोग इसको इग्नोर कैसे कर रहे हो? देखो यार, दो चीजें होती हैं, ठीक है. ओवर थिंक करने का दो कारण होता है. एक, तुम जो सामने में देख रहे हो, इज देयर एनी रीजन टू रिमूव दिस ऑप्शन? डार्क मैटर नहीं मिला, डार्क मैटर की जगह पे दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आए WIMP. तो इज देयर एनी रीजन दैट यू आर एलिमिनेटिंग दिस ऑप्शन? नो, देयर आरंट एनी. एंड इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर डूइंग इट बाय योर ओवर थिंकिंग एंड ऑल, जो भी है. एंड चीजों को मैं हमेशा बोलता हूं, गो विद योर इंट्यूशन. चीजों को ओवर थिंक मत करो, कीप इट सिंपल, कीप इट बेसिक.
हाँ, inference based question में sometimes you might think out of the box, but that's not the case with all the things. Direct question, fact based question है यार, इसमें गलती कैसे कर सकते हो? सर डाउट है एक मुझे। बताता हूँ, आ रहा हूँ, रुक जाओ, आ रहा हूँ, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना दो. Believed to interact with dark matter, making dark matter detectable. No, dark matter, white WIMP आ जाएगा तो dark matter, we can detect dark matter. We haven't discussed anywhere. The largest particle among the dark matter है ही नहीं, तो largest matter उसके अंदर क्या है वो मेरे को कहाँ से पता चलेगा? ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड, सो ऑप्शन ए विल बी माय आंसर. अब बताओ. हाँ सर, ये हाँ. मतलब ऑप्शन ए, इट इज रिटन हाइपोथेसाइज टू मेक अप डार्क मैटर, राइट? So hypothesis is basically putting your own hypothesis, putting your own theory, मतलब जो भी आप put या forward कर रहे हो पुटिंग to समथिंग make up dark, इमेजिनरी, पुटिंग समथिंग हाँ इमेजिनरी. to, या yes, hypothesis to make up dark matter. हाँ, So इससे ये मतलब implicate ये करता है कि WIMP भी मतलब dark matter से मतलब we are basically putting forward WIMP का concept to make up dark matter, लेकिन ये dark matter से related है ही नहीं, मतलब we have discussed about dark matter and that डार्क topic is मैटर, closed. सुनो सुनो मेरी बात सुनो. पैसेज इज सेइंग डार्क मैटर नहीं मिला उनको, थ्योरी प्रूव करनी थी, तो दे वेंट विथ WIMP, Yes, राइट? but it यही is बोल रहा written है. that यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन्ड है ना. रीड दिस आउट. For a while, हाँ physicists मतलब hope to मुझे find a theoretical type of matter डाउट इस called. हाँ बताओ, बोलो बोलो क्या डाउट है? मुझे डाउट इसमें है कि हाइपोथेसिस, हाँ हाइपोथेसिस टू मेक अप डार्क मैटर नहीं है ना, ये हाइपोथेसिस एज एन अल्टरनेटिव टू डार्क मैटर होगा, मतलब ये डार्क मैटर को मेकअप जस्टिफाई करने के लिए मेकअप हाइपोथेसिस नहीं किया है ना। नहीं नहीं बच्चा, डार्क मैटर को ही तो वहां पे यही तो लिखा है कि यहाँ ये लाइन पढ़ो. सिमन व्हाइट एट द यूनिवर्सिटी आर्ग्यूड दैट दिस could be explained using a model in which most of the universe's matter is dark, right? No, since no one detected this out, they searched for dark matter particles, कुछ भी नहीं मिला, nothing bore fruit, then they came up with the theory of WIMP. जब इन लोगों को ये सारे डार्क मैटर कुछ भी नहीं मिले, देन दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. तो वही हुआ ना कि टू मेकअप फॉर दैट, कि उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको मेकअप करने के लिए दे केम अप विद दिस. सिंपल तो है. ओके, गॉट इट? यस जबरदस्ती मत बोलो, नहीं समझ में आया तो यू कैन आर्ग्यू अगेन, दैट्स नॉट एन इशू, डोंट वरी, है ना. बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि दे वे आर ट्राइंग टू सर्च फॉर ऑल दीज डार्क मैटर्स ऑल द टाइम. व्हेन दे डिडंट गेट एनी सक्सेस, दे केम अप विद समथिंग दैट WIMP. तो उसी चीज को डार्क मैटर की जगह पे कोई एक चीज और लेके आ गए जिससे कि दे ट्राई टू प्रूव, बट अगेन दैट डिडंट बोर फ्रूट टू. दैट्स द थिंग, राइट? अभिषेक सॉर्टेड? हाँ सर, यस चलो. Sir, I have a doubt. हाँ बोलो बेटा. जैसे आपने एक्सप्लेन करा है, गेट दैट एक्सप्लेनेशन, बट जस्ट टू बी वेरी श्योर, यू आर सेइंग कि hypothesized to make up dark matter की dark matter नहीं मिला, that's why they came up with this theory. That does not mean कि this particle is making a dark matter, as in it's not a constituent. Dark matter is a big thing, वो इस चीज से बनी है. That does not mean that, right? या और ये लिटरल में It's मीनिंग not a भी है literal भी नहीं. meaning. नो नॉट एट ऑल. Okay, ठीक है. understood. I committed mistake, to make up for that my mom asked for a sorry. That's the concept. Okay. Yeah. फर्स्ट ऑफ सितंबर से तुम लोगों का on a regular basis, Monday to Saturday, you will be having a session from. Is my connection stable right now? Is my voice okay? Okay. So from 1st of September, on every day, right? Every day, single day,
we'll be doing one session from 12:30 midnight to 1:30 midnight, right? We'll be solving 10 VA questions on a daily basis, right? It will be in the text format. Don't worry about कि वीडियोज में होगा. अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं वीडियो में भी कर लूंगा, लेकिन मैं फ्रैंकली बताऊं तो मेरे को वीडियो से ज्यादा इफेक्टिव ना टेक्स्ट लगता है. ठीक है, जिसमें डाउट तुमको आ जाए वो डाउट तुम सीधा डायरेक्टली में से पूछ सकते हो. बट दिस विल बी अ रेगुलर सेशन दैट आई हैव डन फॉर द लास्ट 3 years and that has been effective all the time. So this will be a regular thing for you all from 1st of September. Yeah. This timing will not be cool with some, but I cannot help it with it. क्योंकि ये वही टाइम है जबकि सारे लोग फ्री होते हैं. Okay, Mansi. Kunal, I am saying that there will be a session from 12:30 to 1:30 on every day from 1st of September. We'll be solving verbal ability questions in this session. चलो देखते हैं guys. Wait. अच्छा चलो last 15 seconds if someone wants to wrap it up fast. As soon as you saw D, how many of you thought that D भी एक option हो सकता है? Most probable option. चलो, let's see. Stop. Now stop. Regardless of who turns out to be right, such research on alternatives will ultimately help crystallize the demarcation between what we know and what we don't. It was in the 4th paragraph, if I'm not wrong, right? या 5th paragraph. Last paragraph में ही था ना? Crystallize the demarcation यहाँ पे ही था ना? ठीक है, देखते हैं. What it suggests me कि the notion that gravity behaves differently on large scales has remained relegated to the fringe since Rubens and this guy. But now it's time to consider the possibility seriously. Possibility of what? Possibility of other domains? Scientists and research teams should be encouraged to pursue alternatives to dark matter. Regardless of who turns out to be right, such research on alternatives will ultimately help crystallize this. Indeed, as early as this, Isaac Newton का केस आया, changes ever so lightly depending on object's acceleration. Naturally, planets such as this and this stars orbiting closer to the center of galaxy do not display the difference, right? तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि the major intention of ours is to deep dive into or to delve into other domains just to get the alternatives of what alternatives of dark matter, the plausible explanations for the things that Rubin has discovered, right? यही अपना intention है. Let's see. The author recommends which of the following? Research into ideas that offer an alternative to mainstream physics, right? What the concept of mainstream physics was? Dark matter, right? Alternative to that was WIMP, right? Now, alternative to both of them, mainstream physics was the what? Newton's laws of motion. That was our mainstream physics, where physicists went for all these things.
right? So there were three alternatives, and author had said that we can delve into something else. How could provide an explanation for the speed without needing to invoke so existing Newton's law. That means again some alternation to it, right? So that means this we can keep this out abhi ke liye, because we are talking about the alternative ideas. ये आया डार्क मैटर आया, WIMP आया, न्यूटन्स लॉ आया, देन अगेन द ऑथर इज सेइंग व्हाट कि भाई ये जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कवर की इसमें अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करें, मतलब टू एन अगेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन अल्टरनेटिव, एंड दैट इज फॉर आवर मेन स्ट्रीम फिजिक्स ओनली, राइट? सो आई माइट कीप दिस ऑप्शन अभी के लिए. Research into the existence of forces beyond the known forces of the universe, right? ये भी ठीक है, क्योंकि I want to see कि what are the existing forces beyond the known forces of the universe. We have to research into that domain, ठीक है? Research into the energy that drives stars at the edges of galaxy. Very narrowed approach, only for the stars we are not focused, right? अब क्योंकि दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा ही होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड, ठीक है? क्योंकि वो दोनों आंसर्स, अब इन दोनों में मेरे को देखना है यार क्या भयानक बारिश हो रही है, ठीक है? अब इन दोनों में मेरे को देखना है कि इन दोनों में से मेरा सही आंसर कौन सा है, राइट? तो मेन स्ट्रीम फिजिक्स आर ऑल दीज थिंग्स, जो कि मेरे पूरे पैसेज में ही शुरू से ही ये सारी चीजें, र्यूबिन के काम से लेके अदर फिजिसिस्ट, ऑल दीज थिंग्स जो है ना, वो हम लोग वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अदर फिजिसिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा. सो मेरा मेजर फोकस जो है ना वो फिजिक्स की तरफ रहा है, राइट? तो ऑप्शन ए लुक्स जस्टिफाइड, बट लेट्स सी ऑप्शन बी, है ना? रिसर्च इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है? अब यहाँ पे रिकमेंड किस चीज के लिए किया जा रहा है कि हु टर्न्स आउट टू बी राइट, सच रिसर्च ऑन अल्टरनेटिव्स will ultimately help crystallize the demarcation between कि हम लोग कौन सी चीज को जानते हैं, कौन सी चीज को नहीं जानते हैं. तो it will research into the existence of forces beyond the known forces of universe. तो ये मेरा क्या बोल रहा है कि जो चीजें हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, रिसर्च इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्सेस, जिन फोर्सेस को हम लोग जान रहे हैं उनके अलावा अदर डोमेन्स के रिसर्च में इट विल हेल्प मी नो दैट आउट, राइट? बट अगेन when we are talking about the existence of forces, this forces is a very broader and generic term, right? This is a very broad and generic term. It might be the forces apart from any physical forces or the Newton's laws of motion, the things that we have discussed. It might be talking about any other forces too, chemical forces, metabolic forces, any processes, entropy, etc., etc., anything. And that will be very broader, very generic, and that's not my intention to discuss in this passage. Our major intention is to discuss only the physical forces, राइट? कि इन चीजों से हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे, डार्क मैटर्स के एक्सप्लेनेशन पे, सारी चीजों पे जा सकते हैं. सो ओनली अगर यहाँ पे रिसर्च इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल फोर्सेस होता ना, तो दिस वुड हैव बीन द बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू दिस. बट सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस, this force can be in any domain, and that's not my contention, right? That might go beyond our scope too, and that's why majority of you fell for the same trap again. Option B won't be my answer, option E will be my answer. If you are sorted, please type a S. If you have any doubts, please ask. जल्दी कर लो यार, मेरे को भी पता है संडे है, बोर हो रहे हो, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई, कैट भी तो निकालना है. हाँ बोलो ना अनुराग, डाउट है तो. अनुराग बताओ ना, जल्दी बताओ ना. यस यू आर ऑडिबल, बच्चा जल्दी बताओ. Sir, in option, sir, in the last line of the passage, it stated that like adjusting Newton's law could provide an explanation. So that's why I thought that like it's not asking for an alternative. It's talking about like we just need to like tweak Newton's law and then we may find an alternative. So I thought it that way. तुमने क्या आंसर दिया था? Sir, none of this.
अगेन सी, मतलब नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट फ्लॉड है. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज कि तुम अगर न्यूटन्स, मैंने बोला कि मेरे थ्योरी में तुम कुछ ट्विक करो तो तुम यू माइट गेट अ सॉल्यूशन. तो अगेन व्हाट यू आर डूइंग, इवन व्हेन यू आर ट्विकिंग माय प्रपोज सॉल्यूशन, तो यू आर ट्राइंग टू गेट एन अल्टरनेटिव टू व्हाट आई प्रपोज्ड, राइट? और अल्टरनेटिव फॉर व्हाट? अल्टरनेटिव फॉर द laws that Newton had suggested, या laws that anyone else had suggested, regardless of that dark matter. तो तुम उसके बाद भी तो अल्टरनेटिव फाइंड करना चाह ही रहे हो ना, उन्हीं चीजों का अल्टरनेटिव फाइंड करना चाह रहे हो ना. Yes, sir. हाँ तो गॉट इट अनुराग? नहीं समझ में आया तो फिर पूछो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत Yes. नहीं है भाई. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट्स डू द लास्ट आरसी. जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक योर व्हाट्सएप. नाउ जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्या कोशिश कर रहा था, है ना. Again, we'll start sharp at 110, guys. It's 1-4. We'll start sharp at 110.
Okay, Mansi. Once done, type a D, guys. Done. Perfect, Sunidhi. Perfect, Mansi, Anurag, Varshit, Sunidhi, Sanskriti, Rupali, Maitri, Swasti. Perfect. है ना? अभी देखो गाइस, डिफिकल्ट पैसेज। मैं तुमको फ्रैंकली बताऊं तो अगेन थोड़ा सा साइंटिफिक डोमेन में जा रहा था, फिर वी टॉक्ड अबाउट द क्या क्या चीजें हैं, कोविड-19 के बारे में बात करी, वायरसेस के बारे में वी हैव टॉक, देन वी डेल्व इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ जूनोटिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सारी चीजें मतलब थोड़ी सी ट्विस्टेड थी, राइट? नॉट एन इजी रीड, बट यस इफ यू विल बी गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस, है ना, तो क्वेश्चंस माइट बी डूएबल। ठीक है, what are we saying? At some point in the 14th century, the bacterium Yersinia pestis somehow moved out of the rodent population in western China and became wildly infectious and lethal to humans. So something moved from China and became lethal to humans. This bacterium caused the Black Death,
a plague pandemic that moved from Asia to Europe in just a few decades, wiping out 1/3 to 1/2 of all human life wherever it touched. Although the plague pandemic definitely happened, the story I have been teaching about when, where, and the history of the bacterium has apparently been incomplete at best. What is it? Started from China, एशिया से यूरोप में बहुत जल्दी फैल गया, बट साइमल्टेनियसली ही स्केप्टिकल कि ये जो स्टोरी वो पढ़ा रहा है दैट माइट बी इनकम्प्लीट. दैट मीन्स ही वांट्स टू टॉक, ही माइट वांट टू टॉक अबाउट व्हाट, कि इसका जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, एसेंस था या फिर ओरिजिन जो था, दैट माइट हैव टेकन प्लेस एट सम अदर प्लेस. लेट्स सी. In December, the historian thus published a landmark article, The Four Black Deaths, in the American Historical Review, that writes our narrative of this brutal and transformative pandemic. Now, you know what? This might not be that difficult to read just because we have survived this COVID. So we know what this pandemic is, how these things are have spread, etc., etc. So that's why this might not be that difficult a read. But yeah, if you are not at all aware about the concepts, it might be a thing to torture you. In it, he identifies a big bang that created 4 distinct genetic lineages that spread separately throughout the world, and finds concrete evidence that the plague was already spreading from China to Central Asia in the 1200s. Oh my God. So it is talking about the time domain. Here we have talked about what? 14th century, right? It is talking about ki in the 1200s, there was a concrete evidence that it was spreading from China to Central Asia. This discovery pushes the origins of the Black Death back by over 100 years. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 14th century दिया है, यहाँ बोल रहा है कि in the 1200s it was there, meaning that the first wave of the plague was not a decades-long explosion of horror, but a disease that crept across the continents for over 100 years until it reached a crisis point. So we are talking about the actual origin, वो story जो वो बोल रहा था कि मतलब 14th century, अब वो जो यहाँ पे बोल रहा है कि that has been incomplete. Why is it incomplete? Because of the time domain. Now I got my answer. कि वो क्या बोल रहा है कि टाइम डोमेन की ये चाइना में पहले से 1200 के आसपास ही था. That's why this story was incomplete if I am talking about the 14th century. And इस टाइम पे what happened in the 14th century, what happened, this was there for over 100 years and it reached a crisis point. As the world reels beneath the strains of its own global pandemic, the importance of understanding how humans interact with nature both today and throughout the relatively short period the history of our species becomes more critical. Now we want to justify how we interact with nature. Green tells me that disease like the plague and SARS-CoV-2, before it transferred into human in the late 2019 causing COVID-19, are not human diseases, because the organisms do not rely on human hosts for reproduction. Unlike human adapted malaria or tuberculosis, they are zoonotic or animal diseases, but humans are still the carriers and transporters of the bacteria from one side to another, turning an endemic animal disease into a deadly human one. So the interaction he is talking about, he says these interactions sometimes are so lethal that even the diseases that occur in animals, they are being transferred from one place to another by these humans, right? So again, the author is trying to showcase the interaction, how the interaction is happening, what kind of interaction is happening between human and nature, right? The Black Death, as Monica Green tells me, is one of the few things that people learn about the European Middle Ages. For scholars, the 14th century story contained what Green calls a black hole. When she began her career in the 1980s, we didn't really know when it happened, how it happened, or where it came from. Now we have a much more clearer picture. Obviously, she described in so much detail that everything is clear to us right now. The Black Death and other pre-modern plague outbreaks were something everyone learned about in school or joked about it in a Monty Python XYZ place. It wasn't something that most of the general public would have considered particularly relevant to modernity or to their own lives, says XYZ executive director. With the onset of COVID-19, suddenly medieval plagues became relevant to everyone everywhere. That means as soon as some crisis came, we realized, we started talking about the historical perceptions of that.
else we wouldn't have been too much considerate towards all these things. The project that culminated in Green's article unfolded over many years. She says that the first step required polygenetic analysis of known victims of the plague, including a critical study. So, what she is trying to get from this? When she is doing it, the first step required this first step for what? First step, when she is asking the first step required paleogenetic analysis, first required towards what? Towards the understanding of that, or towards the origin of where it originated? Let's see. This is the study of preserved organic material, really any part of the body or the microbiome down to the DNA of long dead organisms. This means that if you can find a body, or preferably a lot of bodies that you are sure died in the Black Death, you can often access the DNA of the specific disease that killed them and compare it to both modern and pre-modern strains. Did I get my answer? Yes, I'm talking about the origin. First step required to get the origin of कि कहाँ से आया, कैसे आया, how it interacted, how it affected the generations, right? So that's what the author concluded with. So the essence of the paragraph is there was a Black Death kind of thing that happened in 14th century, but uska origin ka time jo tha, that was incomplete. It started in 1200s. Then people were not able to realize all things, or they were not too much considerated towards all those phenomena until COVID-19 happened. Once it happened, people started searching for the historical places where such type of endemic happened. And then the author is saying ki if we are too much considerate about all these DNA and all, if we want to go for the origins of all these, ki from where it came, how it impacted human lives, etc., etc., we have to go for the paleogenetic analysis. That's it. Not that difficult. हाँ कुछ चीजें थी जो out of the box थी, but yeah, that was completely manageable to understand, right? Let's move to the question number 1. Weakening question, difficult one. Okay. Om. Okay, Nitish. Okay, Kanchan. Okay, Shubhali.
Okay, Varshit. Okay, मैत्री, किसी को ये नहीं लग रहा? Okay, संस्कृति. Okay, Surikant. Okay, Mansi. Okay, Rupali. Okay, Anurag. Okay, Swasti. Okay, Farjan. Okay, Vidisha. Last 15 seconds. If you want to wrap it up fast. Okay, Sunidhi. Okay, Smriti. Let's see. Which of the following, if true, would most seriously weaken the argument in the passage? ठीक है. Scientists think that this circulate at low rates within populations of certain rodents without causing excessive rodent die-off. Now, are we too much considerate towards other types of rodents in the paragraph? No, not at all. So completely out of scope. There is concrete evidence that the plague in Central Asia in the 1200s was caused by not one but 4 different variants of Yersinia pestis. Now see यहाँ पे क्या दिया है, the 4 black deaths in this and this है ना, that rewrites of this identifies a big bang that created 4 distinct genetic lineages. तो ये तो already passage is mentioning this out. So it is strengthening the passage, not weakening it. The mutation of this that made it highly virulent and caused the Black Death did not occur until the 14th century, right? So this, what I am saying is this mutant that caused the Black Death, it did not occur until the 14th century. But ये क्या कह रहा है कि before this 14th century ये सारी चीजें जो है वो 1200 से ही एक दूसरे को relate करने लगी थी, right? Origins of Black Death back by over 100 years. इट इज सेइंग कि ये जो है 100 साल से चला आ रहा था और हम लोग देखना कब शुरू किए, व्हेन इट रीच द क्राइसिस पॉइंट. बट ऑप्शन इज सेइंग कि भाई ये 1400 तक तो आया ही नहीं था, इट बिकेम वायरलेंट. और ये वाला जो वायरलेंट वर्जन था ना, जो कि क्या बोलते हैं उसको, एट्रोसिटीफुल वर्जन जिसको बोलते हैं, दैट कॉल्ड द ब्लैक डेथ, इट हैपेंड इन 14th सेंचुरी. द ऑथर इज सेइंग इट हैपेंड इन 12th सेंचुरी. वहां का क्राइसिस पॉइंट पे पहुंचने के बाद we started visualizing this. So obviously this is something contradictory to what author said, so I'll keep this right now. DNA of the mutant form of this that caused the Black Death is different from the forms that cause modern and other pre-modern plagues. Just see the DNA wala part. DNA वाला part हम लोगों ने कहाँ discuss किया है? We have discussed in the last paragraph, right? So she says that first step required this, है ना, really any part of the body or down to the DNA of long dead organisms. This means that if you can find a body that you are sure died in the Black Death, you can often access the DNA of the specific disease that killed them and compare it to both modern and other modern strains. राइट तो ये बोल रहा है कि भाई उस समय में जो चीजें थी ना, उसको आज डीएनए वाले ब्लैक डेथ के डेथ से अगर कोई मरा है उसका डीएनए निकाल लो तो यू कैन कंपेयर दैट आउट. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म्स दैट कॉज्ड मॉडर्न एंड अदर प्री मॉडर्न प्लेग्स. द ऑथर इज सेइंग द सेम थिंग ना, कि थिंग्स व्हाट द थिंग्स दैट हैपेंड, you can get the exact idea of the things by getting the DNA, right? If you can get the DNA of that Black Death, you can get key other things are caused by how, which cases, right? Other pre-modern strains, you can compare those other pre-modern strains as well as the modern strains. So ये भी तो author भी stating the same fact कि भाई DNA ले आओ, DNA से you can judge कि whether it is caused by Black Death, whether it is caused by something other. The option is saying it is different from the forms that caused modern and other pre-modern plagues. So this is substantiating the fact that author is saying, not negating, right?
So that's why option D will be eliminated. Option C will be my answer. Those who had marked option D, you were closer, right? But अगर तुम last paragraph को ध्यान में रखते तो you might not have marked that. If sorted, type S. If you have any doubts, please ask. Those who had marked option D, right? Let's move to the next question then. Easy one, very easy. Okay, Farjan. Okay, Om. Not easy, I'm sorry. Okay, Subali. Okay, Kanchan. Okay, Mansi. Okay, Shaunak. किसके किसके दिमाग में ये है कि कोरोना चाइना लाया था? ओके ओम. ओम कैसा है भाई? तुमसे बहुत दिन से बात नहीं हुई है यार मेरी इधर से. ओके कुणाल. ओके सुनिधि. ओके रूपाली. ओके अनुराग. लास्ट 10 सेकेंड्स गाइस. देखते हैं. राइट. SARS-CoV-2 एंड Yersinia pestis. ठीक है. The plague and SARS-CoV-2 before it transferred. यहाँ देखो. The relatively short history of our species becomes more critical. Green tells me that diseases like the plague and the SARS-CoV-2 before it transferred into humans causing COVID are not human diseases because the organism etc they are zoonotic X, Y and Z, right? उसके बाद फिर we talked about ये, then we talked about COVID-19 का onset आया है ना, and all these things, right? एक चीज बताओ मेरे को. both cause zoonotic disease which may then be transferred to other animals. Humans are also a part of animal, right? ठीक है. तो they are zoonotic diseases that can be transferred. ये तो essence of the paragraph बोल ही रहा है. तो this is perfectly fine. There are instances of pandemics caused by both groups of pathogens. Yes. एक वो लेके आया, एक SARS-CoV-2 COVID-19 लेके आया, और ये जो था वो ब्लैक डेथ लेके आया, Yersinia pestis. So this is also correct. They do not rely on human hosts for reproduction and multiplication. When they are zoonotic disease, why will they depend on human? यार simple सी बात है, for reproduction, right? So they are zoonotic disease clearly mentioned in the passage. So obviously they won't be relying on human hosts for reproduction. ठीक है. In both the pathogens that caused the pandemic originated in China. कहाँ पे लिखा है कि कोरोना को SARS-CoV-2 virus originated in China? We have talked about it in the case of Yersinia pestis, but not in case of SARS-CoV-2. The origination we have not discussed. The bias. This is the bias I always talk about. कि mind में रहता है. When you read about it, उससे related अगर कोई चीज रहती है तो वो तुम्हारे दिमाग में रहती है. But you cannot go beyond the scope of the passage. Keep it in mind. Right?
So that's why option D will be my answer. Not option A, not option B, not option C. If sorted, type S. Right? Sonak, I know that तुम्हारा lunch time है. You have to go. I know. ना? Yeah. चलो guys, last question. This is your homework. We will be discussing it after the break. नहीं. दो ही है क्या? चलो इसमें दो ही था. Sorry. तो फिर ठीक है. We are done with these three passages. In the next 2:30 मैं नहीं रख रहा हूँ, 3 to 6 रख रहा हूँ, है ना? 2:30 बजे से जो शुरू करने वाला था वो 3 से 6 करते हैं, राइट? तो we'll be starting at 3, we'll be ending at 6, and we'll be discussing 3 to 4 hours in that time frame. And again from 10 to 12 we'll be discussing the VA today, right? Bye guys. Thanks for joining in. We'll be joining on the same link, so don't yeah, I'm not ending it out. So again, I have shared the 3 PDFs with you guys, 3 RCs with you guys. We'll be discussing all the 3 RCs in this session, right? So the first RC is in front of you all, and you have that in your. Oh, sorry. Wait. I have to share that. Just a second, guys. I have shared only in B3. I'll have to share that in B2 and B1 as well, right? Yeah. So I have shared the PDF with the RCs with you all, in the group, right? Yeah. So the RC is in front of you all. You have 5 to 6 minutes to read that RC, and then we'll start discussing the RC. I want all of you to. I know it will be a hectic schedule. I know that, बच्चा है ना. But this is how things are being done, right? कि अभी से कर लोगे तो चीजें तुम्हारे लिए ही sort out रहेंगी, है ना? तो it's just a matter of 3 hours. We'll solve that और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, है ना? So try to be focused for these 3 hours. You have exactly 6 minutes. Once done, type a D.
Okay, Shnidhi. Perfect, Rupali. परफेक्ट रमन. रमन पहले क्लास में कहाँ था रे? परफेक्ट फरजान, परफेक्ट अनुराग, परफेक्ट विदिशा. ओके स्वस्ति, ओके ओम. Last 10 seconds, guys. If you want to sum it up fast. Perfect. Okay, so Raman, the gist of this RC in 2 sentences. Rupali, Yes, sir. the gist of Uh, this RC, yeah. The author talks about Mhm. moral, talks about golden rule. Like whenever you're confused if you should do something or not, just think, just put yourself as a receiver. How would you like it if that thing is done to you? Is it Right? the And golden? Is it the golden rule or the ask first? golden rule. Okay. Right, and then it after that it talks about another rule which is called ask first. Mhm. Right, in that he simply says you should go ahead of golden rule and simply ask first when you are confused. How would the respondent react to that action? Right. What should be the conclusion? In the end, conclusion says there are some places where you should ask first, but there are some places like adultery where it should be morally you should know that this is wrong and you should not ask. Like this is what I feel. It is very situation based. Some places you should ask first. Partially correct. If I am trying to conclude, so the conclusion will be the emotional impact of the ask first to the golden rule principle, right? And according to that, we have to conclude. Okay, let's see. Yeah. Have I started? Yeah. So if we cannot reliably turn to the Bible and other sacred texts to determine moral right or wrong, and wrong, to whom shall we turn? Open-ended question. So the passage starts with a question. If we cannot ask God, whom shall we ask? One answer can be found in the first moral principle, the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. The golden rule is a derivative of the basic principle of exchange reciprocity and reciprocal altruism. That means what? Altruism means wise behavior, generous behavior, right? So do something like you want from them to do to you. Okay? And thus involved in our Paleolithic ancestors as one of the primary moral sentiments. So our ancestors had followed this golden rule. If I am right about this, then it means that religion did not invent the golden rule, and other moral principles, if co-opted them, then codified them. Matlab, there was no inclusion of morals or religions when we were creating this rule, right? These things, religion and all those things, adapted them. In this principle, there are two moral agents, the moral doer and the moral receiver, and this will be your conclusion.
what impact does this have on moral doer? What impact does it have on your moral receiver? And then on the basis of that, you can go for either you should go for the golden rule, or either you should go for the ask first rule. देखते हैं आगे. A moral question arises when the moral doer is uncertain how the moral receiver will accept and respond to the action under question. In its essence, this is what the golden rule is telling us to do. कि जो भी सामने वाला कैसा रेसिप्रोकेट करेगा उस तरह से तुमको सोचना है. By asking yourself, how would I feel if this were done unto me? You are asking, how would others feel if I did it unto them? Same thing, we are repeating it on a repetitive basis, but the golden rule has a limitation. What if the moral recipient thinks differently from the moral doer? What if you would have not mind having action X done to you, but someone else would mind it? Most men, for example, are much more receptive towards unsolicited offer of sex than are women. Most men then, in considering whether to approach a woman with an offer of this, should not ask themselves how they would feel if the roles were reversed. So बेसिकल इंटेंशन ऑफ माइन इज टू, जब मैं गोल्डन रूल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या आती है कि सम सिनेरियोज आर देयर वेयर आई माइट नॉट माइंड द थिंग बट समवन एल्स माइट माइंड, right? It might, for example, I might not consider some of the words XYZ words as slangs if I come from some XYZ origins, but some another state's origin people might consider them as slangs, right? So this is onto them ki haan, some things that I might not recept in a different way, that might be recepted in a different way from someone else, right? So this is one limitation. और यहीं से इस लिमिटेशन के कारण आंसर कहां पे आ जाता है? We need not take the golden rule one step further through what I call the ask first principle, right? We need to take yahi pe, as this is the limitation with this case, the solution might be the ask first principle. Now what this ask first principle is? There is one surefire test to find out whether an action is right or wrong. Ask first. The moral agent should ask for the moral recipient whether the behavior in question is moral or immoral. मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ ले रहा हूँ कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए moral है या immoral है. If you aren't sure that the potential recipient of your action will react in the same manner you would react to the moral behavior in question, then ask. Consider an easy test of the ask first principle: adultery. If you want to know if having an extramarital यार extramarital affair is moral or immoral, है ना? तो if देखो अब यहाँ पे क्या है चीजों को, see this is the presentation of the author. The last few RCs that we read and the RC that I am reading here, यही होता है writing style of the author, right? कि it wants to keep you binded with each and everything. At each and every step it has given you the question, it has given you the answer, right? This is the thing, this is the thing, and the questions, the answers related to that, that's the answer that is relatable to each and every candidates of around us. Like यहाँ पे क्या है? Unsolicited offer of sex. यहाँ पे क्या है? Adultery. So negative things keep us binded more, you know, है ना? So this is how, this is a very fine style of writing, right? So now we are going towards what extramarital affair is moral or immoral. Ask for the potential affected moral recipient, your spouse. Honey, is it okay if I sleep with someone else? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को पढ़ने में भी शर्म आ रही. You will receive your moral answer swiftly and without equivocation. In this example, as with so many others, you do not actually have to ask the question to know the answer. The thought experiment alone should give you a strong sense of what is right and wrong. Now see, ask first में क्या है कि there are two opinions in this ask first that the author has included. The first opinion is कि if you are not sure about something, ask them. But sometimes, even if you don't ask, the moral obligations or the thought experiment alone will give you a strong sense of whether this is right or whether this is not right. So there are two things that we discussed abhi tak. Golden rule, ask first. Let's see. Such moral thought experiments are at the heart of moral reasoning. For this process, you can monitor your own sense of guilt and other emotions as a guideline. Imagine in the above example how you would feel if your partner had slept.
For most people, imagining their partners being this is extremely emotionally disruptive. It is not a big leap of the imagination for the moral doer to project that response onto the moral receiver to get an answer. See the binding of the paragraphs, right? Here we have talked about the moral doer and moral receiver thing. Then again, they have talked about the same thing in the conclusion, right? If you want to judge something, right, go through your own response, go through, try to imagine what it will let you feel when you face that situation. Impact of it on the doer. If I'm the doer, impact of it on mine, and the receiver might be my spouse, right? So these are the things. First, golden rule: ask first, impact on the doer, impact on the receiver, right? These are the things, these are the moral extractions that I can extract from this RC, right? So first, what we did, we introduced the topic, right? Introduced what? Introduced the golden rule, right? Once we introduced, then discussion happened on this golden rule. Along with the discussion, we talked about the limitations. Then we talked about the introduction of ask first. And from there, I came to a conclusion that impact on doer and the receiver. This is how you create the mind map, right? Now you can create your own story, but the essence of the story will be the same as the author. Let's move to question number 1. Easy question, very easy. Okay, Anurag, okay, Mansi, okay, Kartikeya. Okay, Anand. Anand, how are you, bro? Didn't interact since long. Okay, Raman, okay, Deepti, okay, Sanskriti. Karthik, change your settings. किसी और के मैसेजेस तुमको दिख रहे हैं? ओम नायक, प्लीज चेंज योर सेटिंग्स. किसी और के मैसेजेस तुम लोगों को दिख रहे हैं? पर तुम्हारे गलत आंसर सबको दिख रहा है. बाकी लोग सोच रहे होंगे यार मैंने भी गलत आंसर दे दिया क्या. ओके शुभाली. ओके विदिशा. ओके वर्षित. ओके नितेश. ओके चेष्टा. फरजान. परफेक्ट. ओके सुनिधि. ओके कंचन. चलो लेट्स सी वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, है ना. बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो है ना, दे वेयर द फर्स्ट मोरल प्रिंसिपल इज नॉट इनफॉलिबल. भाई ये कोई भी प्रिंसिपल कंप्लीटली परफेक्ट तो है नहीं. सिंपल सी बात है. मोरल प्रिंसिपल इनफॉलिबल नहीं होता तो ये आस्क फर्स्ट वाला रूल आता ही नहीं. ठीक है, तो ये ऑप्शन डी तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया. द प्रिंसिपल बिहाइंड द गोल्डन रूल गोज बैक टू द पेलियोलिथिक एज. हमारे एंसेस्टर्स वही काम करते थे, क्लियरली लिखा हुआ था यहाँ पे. गोल्डन रूल एंड अदर मोरल प्रिंसिपल्स, है ना. पेलियोलिथिक एंसेस्टर्स, ये लोग वही काम करते थे. तो ये भी ट्रू है, राइट. तो मोस्ट लाइकली बी फॉल्स पूछा है, ये भी ट्रू है, तो ये एलिमिनेट हो गया. द गोल्डन रूल कैन नॉट वर्क व्हेन पीपल आर लाइक माइंडेड. भाई लाइक माइंडेड होगा तभी तो ये काम करेगा. गोल्डन रूल तभी तो काम करेगा कि भाई
जैसा मेरे को लगता है वैसा उसको भी लगता है, तो मैं वो चीज पूछूं क्यों? आस्क फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट वहां पे आता है ना जहां लोग पीपल आर नॉट लाइक माइंडेड। ठीक है, अगर लाइक माइंडेड पीपल है तो गोल्डन रूल विल वर्क, देयर कैन नॉट वर्क का तो सवाल ही नहीं होता, तो दिस इज रॉन्ग, राइट? मतलब दिस इज रॉन्ग। द स्क्रिप्चर्स मे नॉट ऑलवेज बी द गो टू गाइड फॉर मोरालिटी, परफेक्टली फाइन, तभी तो हम लोग ये सारे प्रिंसिपल्स को लेके आ रहे हैं ना। सो अगेन दिस ऑप्शन इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन फॉल्स पूछा है तो ऑप्शन बी विल बी माय आंसर। इज इवन इफ सॉर्टेड टाइप है, सबके आंसर टू ही थे, एक दो को छोड़ के। एक आनंद का आंसर सी था और बाकी लोगों के आंसर्स बी ही थे, आई गेस, राइट? नितेश का भी, नितेश ए क्यों मारा था? अभी यू गॉट इट नितेश? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगेन वेरी इजी यार, वेरी इजी। आदर्श कमाल है यार। नहीं टाइम क्यों, मानसी फिर से सोच। ओके कार्तिकेय, ओके शुभाली, ओके सुनिधि। ओके स्वस्ति, ओके संस्कृति शौनक, ओके विदिशा, ओके मानसी। विदिशा परफेक्ट। ओके मैत्री, लास्ट 10 seconds, wrap it up. All of the following can be inferred about the first moral principle, except its foundation was the principle of reciprocity among prehistoric humans. भाई क्लियरली दिया है कि पेलियोलिथिक एज में जो है ना, इट वाज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि भाई उसको कैसा लगेगा वैसा ही आई विल बिहेव, राइट? तो इट कैन बी डायरेक्टली इन्फर्ड। The first moral principle did not take account of the ask first principle. Obviously yes, अगर it would have taken into account तो ये principle को introduce करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो this again can be inferred. The first moral principle succeeds on the basis of empathy. Oh, succeeds on the basis of empathy. Really? Let's see. यहाँ पे क्या है? सेक्रेट टेक्स्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, वन आंसर कैन बी फाउंड इन फर्स्ट मोरल प्रिंसिपल, गोल्डन रूल। यहाँ पे क्या है कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू डू, है ना? मतलब कि उन लोगों के साथ अच्छा, यस यस यस, आई रिमेम्बर दैट वर्ड, वो जेनरोसिटी अल्ट्रुइज्म वाला था, राइट? देयर वाज सम वर्ड अल्ट्रुइज्म, समथिंग ऑन द, या रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, है ना? तो दैट मींस जनरस बिहेवियर, सो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, राइट? रिलीजन्स वेयर द ओरिजिनेटर्स ऑफ मोरालिटी। भाई अगर मैं तीनों ऑप्शंस नहीं भी एलिमिनेट करता ना, ये ऑप्शन में जैसे ही पढ़ता मैं इसको एलिमिनेट कर देता, क्योंकि फर्स्ट लाइन मैंने जब मैं पैसेज पढ़ रहा था वही चीज हम लोगों ने डिस्कस ही की थी, है ना? कि इफ वी कैन नॉट आस्क गॉड एटसेट्रा एटसेट्रा, रिलीजन का इसमें कोई यूज ही नहीं है। वी हैड रेड दैट आउट, रेड द लाइन क्लियरली इन दिस, है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, कि रिलीजन का इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी माय आंसर। Got it, Vidisha? Right?
गॉट इट मानसी? या हाँ, डायरेक्ट ही तो था, इसीलिए तो मैंने बोला डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। दैट्स व्हाई आई सेड कि इट वाज एन इजी क्वेश्चन यार, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली बोथ ऑफ देम वर रॉन्ग, अदर्स वर राइट। डायरेक्ट था, आसान क्वेश्चन में तुम लोग हीरो तो बनते ही हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वर्षित, ओके अनुराग, वेरी गुड संस्कृति, वेरी गुड रोहन, ओके मानसी, ओके मैत्री, वेरी गुड चेष्टा, ओके शुभाली, ओके शौनक, वेरी गुड स्वस्ति, वेरी गुड दीप्ति, ओके फरजान, ओके सुनिधि, ओके कंचन, ऑलराइट लेट्स सी, है ना, देखते हैं। ओके विदिशा वेरी गुड, रमन वेरी गुड। ओ संस्कृति, आफ्टर वेरी गुड यू चेंज्ड योर आंसर, व्हाई इट्स सो? चलो देखते हैं गाइस, है ना। Which of the following, if false, would strengthen the ask first principle? Ask first principle है क्या, राइट? सामने वाले से पूछ लो, है ना, और उसके बाद या उसी अकॉर्डिंग अगर उसको बुरा लगेगा तो मत बोलो, बुरा नहीं लगेगा तो बोलो। दैट इज योर आस्क फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बोल रहा है इफ फॉल्स वुड स्ट्रेंथन द आस्क फर्स्ट प्रिंसिपल टू सीक अ नॉड बिफोर एक्सिक्यूटिंग द टास्क्स दोज हु हैव मार्क्ड डी। टू सीक अ नॉड बिफोर एक्सिक्यूटिंग द टास्क, पूछ लो उसके बाद अपने टास्क को एक्सिक्यूट करो। अगर ये ट्रू होगा तो इट विल स्ट्रेंथन, अगर ये फॉल्स होगा तो इट विल नॉट स्ट्रेंथन, right? Those who have marked C to open another door as one door closes. Now this is completely out of domain, है ना, कि to open another door as one door closes, कौन सा डोर क्लोज कर रहे हो, कौन सा डोर बंद कर रहे हो भाई, है ना। और वो आस्क फर्स्ट प्रिंसिपल का एसेंस आता कहां से है उसमें, तो दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप। To give someone a test of their own medicine, okay, so this we do in a, this we present in a very negative way, right? To give someone a taste of their own medicine, that means if someone had stated wrong words, right, you have to say wrong words, right? That means, and if false, that means if someone had said wrong words, you have to say right words, right? इसका अपोजिट इफ फॉल्स का मतलब यही लाइन हुआ, wrong words if someone has not used properly, if you have someone has not talked with you properly, you should talk them with properly. This is the essence of it, right? But एक चीज समझो, गोल्डन रूल से ही निकल के ये चीज आ रहा है, राइट? आस्क फर्स्ट प्रिंसिपल गोल्डन रूल के लिमिटेशन को कवर करना चाह रहा है, राइट? व्हाट्स द लिमिटेशन, की जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, हो सकता है सामने वाले को वो अच्छी लगती हो, या जो चीज तुमको अच्छी लगी हो सकता है सामने वाले को वो अच्छी ना लगी हो,
राइट तो इसीलिए उससे पहले पूछ लो कि भाई अगर मैं इफ आई विल बी यूजिंग सच एंड सच वर्ड्स विल दैट बी कूल विथ यू. यही एक दिस वाज द ओनली लिमिटेशन विथ मोरल बेस्ड प्रिंसिपल द गोल्डन रूल. राइट तो वी हैव कवर्ड दैट लिमिटेशन इन आस्क फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना. तो इफ इट इज फॉल्स, राइट, दैट मीन्स इफ समवन हैज यूज्ड रॉन्ग वर्ड्स यू शुड यूज द राइट वर्ड्स. ठीक है. बट इवन इफ समवन हैज यूज्ड रॉन्ग वर्ड्स तो वहां पे रेसिप्रोसिटी वाली बात तो है ही नहीं. एंड व्हेन रेसिप्रोसिटी वाली बात नहीं है द कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन एम्पैथी, वो वाली बात नहीं है. तो दिस गोज इन अ वेरी नेगेटिव डोमेन. एंड my RC is all about the positivity, right? So again this goes out of the scope of the RC. Now this option says to shoot first and ask questions later. If false means ask first, right, and shoot later. This will be the essence. अगर इसका false version ये false है, right? If this is false तो इसका true version क्या होगा? Ask first and then shoot later. And that's the essence of ask first principle ना. Ask first questions and then shoot कि हाँ पहले उससे पूछ लो भाई कैसा लगेगा, then shoot the question you want to shoot. This is the essence. So that will, अगर ये false होता है तो it will strengthen my argument. So option A should be the answer. Again an easy one जहाँ की तुम लोगों ने अपने आप को all those whom I told very good, all of them were wrong. Got it? How did I eliminate B? Okay. How did I eliminate B? बच्चा B is saying to give someone a taste of their own medicine. है ना. ये मतलब क्या हो गया कि ना कि रेसिप्रोसिटी इन ये कि अगर किसी ने गलत बात बोला तो गलत बोलो, ठीक है, सही बात बोला सही बोलो. लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है, सबसे पहला एसेंस तो वो है ना मेरा. गलत बोला तो गलत बोलो, सही बोला तो सही बोलो. अगर इसका निगेटिव भी लेते हो इन अदर सेंस, अगर इफ यू थिंक इट इन अ डिफरेंट डोमेन, अगर इसका निगेटिव भी लेते हो तो गलत बोला तो सही बोलो, सही बोला तो गलत बोलो. Is it what I intend to speak when I talk about ask first principle? No. So that's why option B is eliminated. Sir, Yeah. sir, but like, I think if we try to negate the statement to give someone a taste of their own medicine, so it should be like to give someone a not the taste of their medicine. So like if someone is behaving with me not in a very good way, so I mean I will not do that. So probably I will behave in a good way. So sir, अगर इसका negative वाला strengthen करेगा argument को, तो उस हिसाब से ये तो strengthen सिंपल. करेगा ना, because तुम्हारे सर ही last paragraph तुम्हारे में सेंटेंस से हाँ समझाता हूँ तुमको. रुक जाओ मैं समझ गया. तुम्हारे ही सेंटेंस से हम्म, समझाता हूँ. If someone is behaving with you in a good way, you shouldn't behave with them in a good way. Right? वो उसका निगेटेड वर्जन, इसका निगेटेड वर्जन वही होगा. right. Right? And is that the essence of my ask first principle? Ask yourself. No, sir, no. That's all. Got it? Yes. Perfect. Let's move to the next question. ऐसे क्वेश्चंस करने में ना बड़े बहुत डर लगता है एग्जाम में, पता है. सारी चीजें लगभग सेम रहती है और सीरियसली वीकेंड या सीरियसली स्ट्रेंथन रहता है, तो लंका ऐसे लगी रहती है. वन एंड हाफ मिनट्स ऑफ टाइम गाइस, करो.
ओके फरजान, ओके ओम, ओके वर्षित, ओके रूपाली, ओके संस्कृति, ओके कार्तिकेय, ओके विदिशा, ओके अनुराग, ओके नितेश. Last 30 seconds. रूपाली एग्जाम में मैं तुमको बताऊं, छोड़ दिया कर ऐसे क्वेश्चंस को, अगर टाइम मिल जाए तो बाद में कर ले, है ना? हाँ बोलो. ओके दीप्ति. What I suggest, obviously if someone finds it easy to do they can do, लेकिन ये मेरे को भी टफ लगता है यार. अब टफ क्यों लगता है? ऐसा नहीं है कि मैं एलिमिनेट करके आंसर तक नहीं पहुंचूंगा, बट आई हैव टू थिंक अबाउट ऑल द क्वेश्चंस, all the options, then I'll have to judge whether it is strengthening or weakening, and it will take time. So even the process of elimination will take time in such questions. So my basic intention is कि मेरे को पैसेज तो पूरा याद ही रहता है, अगर मेरे पास लास्ट में टाइम बच जाता है, I'll come to this question अगर मेरे पास बचा हुआ टाइम, and I'll do that, not before that, है ना? नो नॉट डिफिकल्ट, अभी तक तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, पहले दो तो आसानी थे ना कार्तिकेय, राइट? So which of the following, if true, would most seriously weaken the argument that ask first is a surefire test, right, to find whether an action is right or wrong? Action justification, right? So what I am saying is that this ask first test is giving me the apt justification of our action. The sentences, if any sentences out of these are true, that should weaken. So if I want to weaken, that means what? Ki it is not a surefire test for action justification, right? तो जो भी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, जो स्टेटमेंट बेस्ट सुइटेबल होगा, इस चीज को जो प्रूव करता होगा, दैट विल बी माय आंसर. हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ट्रू है, वीकेन कर रहा है स्टेटमेंट को, मैंने स्टेटमेंट लिखा, वीकेन कर रहा है मतलब मैंने उसके आगे में निगेटिव सेंटेंस लगा दिया. यहाँ नॉट श्योरफायर टेस्ट था, मैंने नॉट अ श्योरफायर टेस्ट कर दिया. ट्रू है तो ट्रू ही है, राइट? अब देखते हैं. The potential recipient of the action thinks differently from the moral agent. Okay, potential recipient of the action thinks differently from the moral agent. तो यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से रूपाली इज देयर, है ना, एंड लेट्स से सूरज इज देयर, राइट? नाउ व्हाट सूरज डज, राइट, he talks with Rupali in a derogatory way, let's say, though I don't, but he talks with Rupali in a very derogatory way. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? पोटेंशियल रेसिपिएंट, हु इज द रेसिपिएंट? रूपाली इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन, जो रिसीव कर रहा है, थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम द मोरल एजेंट. नाउ सूरज थॉट दैट रूपाली डजंट take it in a bad way, but it was actually in a bad sense, right? Now tell me one thing, ki this statement, is it not a surefire? What I have to prove, ki it's not a surefire test for action justification, right? तो इफ आई एम सेइंग दिस आउट कि हाँ, मेरे को लग रहा है कि मैंने सही बोला है रूपाली को, लेकिन वो गलत लगा, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी. नाउ सी, अगर मैं इस जगह पे क्या हो रहा है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि रूपालीज मेंटालिटी डजंट मैच विद सूरज मेंटालिटी, इन दैट केस क्या हो रहा है? मेरे को लग रहा है कि मैंने सही बोला, राइट, बट रूपाली को वो गलत लग रहा है. But if I'm talking about like-minded people, right,
for example, let's say I am there and Anurag Panda is there, right? We are like-minded people. मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई मैंने जो बोला है अनुराग को वो बुरा नहीं लगा, अनुराग को वो सच में बुरा नहीं लगा, right? तो अब क्या हो रहा है, for opposite-minded people, this might give me the result what I thought. For like-minded people, this is not giving me the result that I intend to get. So not a surefire test, I can say that, right? कि हाँ ये सच में अगर इन लोगों के लिए तो इस टेस्ट से मेरे को रिजल्ट आ रहे हैं, इन लोगों के लिए मेरे को इस टेस्ट से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो दैट मींस आई कैन से दैट इट्स नॉट अ श्योरफायर टेस्ट. So I'll keep this option. The moral agent raises a question which is thoroughly immoral. Okay, so the moral agent raises a question which is thoroughly immoral. अब यहाँ पे क्या है कि let's say मैं एक immoral question पूछ रहा हूँ. Now the passage says what? यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये मेरे को क्या बोल रहा था, ये लाइन, let me erase this out. What this line says, erase all links. What this line says is कि you will receive your moral answer swiftly and without equation, right? In this example, as with so many others, you do not actually have to ask the question to know the answer, right? तो अगर immoral question है तो तुमको already पता है ना, कि भाई ये चीज मैं जो पूछ रहा हूँ ये गलत ही पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो whether you go with the golden rule first or whether you go with the ask first rule first, you will be getting a sure shot solution, right? तो that means what कि it is a surefire test. अगर immoral ही है तो मेरे को ही पता है कि भाई immoral है, फिर चाहे मैं क्वेश्चन पूछूं या ना पूछूं, right? मेरे को आंसर पता रहेगा कि आंसर क्या आने वाला है, तो in that case it will be a sure shot test, right? It will be a surefire test for action justification क्योंकि action is already justified, है ना? So that's why this option goes wrong. The potential recipient of the action is a staunch believer in moral values. Again, when I am staunch believer in moral values, मेरे को पता है कि भाई things cannot go wrong, क्योंकि morally अगर मैं sound हूँ, उन questions के answers again मेरे को पहले से पता होंगे कि भाई मैं morally अगर sound हूँ, ठीक है, तो उन questions के answer मेरे को पहले से ही पता होंगे, तो again it will be a surefire test क्योंकि मेरे को answer तो पहले से ही पता है ना, तो that's why this option also goes out of scope. The potential recipient of the action shares the uncertainty of the moral agent. Okay, so it says that of the action shares the uncertainty of the moral agent. Now, if someone is uncertain, okay, whether it is right or whether it is wrong, right? Even if you are doing the good things, right, you won't get a sure and certain answer. Even if you are doing the bad things, you won't get a sure and certain answer, right? तो यहाँ पे again what my intention is to describe कि यहाँ पे मेरे को पहले से ही पता है इस केस में भी कि भाई मैं कुछ भी करूं, ठीक है, मेरे को सही आंसर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, right? तो that's why इस केस में even in this case I know what the outcome might be, right? Whereas in this case I don't know what the outcome will be, right? So दिस केस का भी आंसर मेरे को पहले से पता है, यहाँ का भी आंसर मेरे को पहले से पता है, यहाँ का भी आंसर मेरे को पहले से पता है, तो वीकेंड कौन कर रहा है, आई हैव टू प्रूव व्हाट कि नॉट अ श्योरफायर टेस्ट, नॉट अ श्योरफायर टेस्ट को बस यही ऑप्शन प्रूव करेगा. सो दैट्स माय व्हाई माय आंसर शुड बी ए. वेरी 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन. इफ सॉर्टेड टाइप एस, हवा नहीं लगा तो टाइप एन एच, और अगर समझ गए हो तो कूल है, अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू गॉट इट? एग्जाम में मैं यही सजेस्ट करूंगा. हाँ बताओ. सर आई हैव अ डाउट कि अगर फर्स्ट वन को हम देखेंगे तो ही कैन लाइक द अदर पर्सन कैन से यस और नो. अगर वो डिफरेंट सोचता है देन वी विल गेट एन आंसर. बट इन द फोर्थ वन अगर वो अनसर्टेन है तो ही वॉन्ट बी एबल टू आंसर एज वेल. तो दोनों के पास ये आंसर नहीं होगा. नहीं, दोनों के पास आंसर नहीं होगा वाली बात नहीं है. मेरे को पता है कि भाई मैं उससे कुछ भी पूछूंगा वो बंदा अनसर्टेन है, ठीक है, तो मेरे को जो आंसर मैं चाह रहा हूं वो आंसर मेरे को नहीं मिलेगा, ये चीज मुझे पहले से पता है. तो श्योरफायर टेस्ट हो गया ना कि मेरे को पहले से ही चीज पता है कि मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा.
तो मैं तो श्योर हूं ना अपने एक्शंस के लिए। समझ में आई बात? नहीं, but we are asking the other person when we ourselves are confused कि something is right or wrong to do. इन And दैट if we केस, are going to, in that case also, वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, in that case also, even if we are asking, even if I am confused and I am asking the question to the recipient, I know कि I won't be getting the answer. That thing I know. तो ये चीज तो मुझे पहले से पता है ना कि भाई मेरे को एक्शन जस्टिफिकेशन मिलने वाला है ही नहीं। इस केस में मेरे को पता है कि भाई मैं जो पूछ रहा हूँ वो गलत पूछ रहा हूँ, इस केस में मेरे को पता है कि भाई मैं जो पूछ रहा हूँ वो सही पूछ रहा हूँ। तो इन तीनों केसेस में मेरे को पहले से पता है कि व्हाट आई एम आस्किंग एंड व्हाट दैट आउटकम कैन बी। तो ये मेरे लिए एक श्योर फायर टेस्ट हो गया ना। लेकिन इस केस में क्या है, अगर वो दूसरे तरह से सोचता है तो मेरे को एक श्योर शॉट आंसर नहीं मिलेगा, अगर वो लाइक माइंडेड है तो मेरे को एक श्योर शॉट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये नॉट श्योर फायर टेस्ट हो गया ना। okay sir, गॉट इट? hmm. चलो एग्जामिनेशन में आई वोंट सजेस्ट टू डू क्वेश्चंस, बाकी आपके मोरल्स पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ। राइट, 4 क्वेश्चंस थे ना इसमें, 1 2 3 4 या गाइस गिव मी जस्ट 30 सेकेंड्स। संस्कृति एक बार तू अपने आउटपुट्स बताना, क्या बोल रही थी तू? मेरे को एक चीज तुम्हारा सही लग रहा है, बता तो एक बार तू क्या बोल रही थी इसमें। Sir, मतलब हाँ I got to understand the gist that we are asking the other person when we are not sure whether the other person will agree to it or not, if something is right or not सॉरी to सॉरी, do. हाँ हाँ ठीक है। In that case, if we are going to ask the other person and he himself is not sure, then we will not get an answer whether we should do it or not. But if his morals are different, then he might not agree with us, but still we will get an answer that it is not right according to him. Like we are not sure, we are uncertain, मेरे को एक and the other एग्जांपल से person समझा, will. मेरे को किसी एग्जांपल से समझा तू जो बोल रही है। जैसे सर पैराग्राफ में जैसे जो गिवन था कि ही आस्क हिज पार्टनर, तो फिर वो एक आंसर देंगे जो हमें पता होगा कि क्या आने वाला है, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नो। तो उस अकॉर्डिंग पे इफ द अदर पर्सन, द पार्टनर इज ऑल्सो नॉट श्योर कि सही है या नहीं, तो दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू आंसर। लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो चीज गलत होगी तो वो ना कह देंगे, एंड वी नो कि अदर पर्सन will be affected by it negatively, तो फिर ये करना मोरली गलत हो जाएगा। गाइस इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखो। आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन ए एंड डी, बिकॉज जो चीज संस्कृति कह रही है ना, शी इज करेक्ट एट हर ओन पॉइंट्स। इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखो, मैं इस क्वेश्चन को क्लास के बाद देखता हूँ, है ना, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कोई खींच के डाउट्स ग्रुप में डाल दो तो। क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस मेरे को थोड़े से ना ये परेशान कर रहे हैं। पहले मेरे को सही लग रहा था, बट जब मैंने संस्कृति के ओपिनियन सुने हैं ना, तो मेरे को लग रहा है संस्कृति इज राइट एट हर पॉइंट्स। उस एंगल से भी अपन सोच सकते हैं जहां मेरा दिमाग नहीं गया है। डन। मैं अभी सोचता हूँ, तुम लोग करो, तुम लोग नेक्स्ट वाला आरसी करो, है ना। मैं एक बार सोचता हूँ इस पे। ये वाला आरसी करो गाइस। तुम लोग प्लीज व्हाट्सएप से पढ़ लेना, यहाँ से मत पढ़ो, तुम लोग व्हाट्सएप से पढ़ लो ताकि मैं पीछे वाले इस पे पेज पे जा सकूं। Potential recipient of the action, it's difficult legend.
seriously weaken the argument. Not a safe test. I'm talking about not a safe test. संस्कृति पिन पॉइंट यार, पिन पॉइंट गाइस, इसका आंसर डी होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। पिन पॉइंट यार, है ना। सी द थिंग इज वेरी गुड जॉब यार, एंड दैट्स व्हाई आई लव टू गेट द इंटरेक्शन इन क्लास, यू नो। समटाइम्स ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही सही रहूंगा, है ना, और क्वेश्चंस मैं पहले से करके नहीं आता, ठीक है। तो द थिंग इज ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, यहाँ पे क्या है गाइस, मैंने जो यहाँ पे दो चीजें मैंने दी थी, एक लाइक माइंडेड पीपल दिया था मैंने, है ना, एंड एक मैंने दिया था कि अपोजिट माइंडेड पीपल, ठीक है। ऑन दैट रैशनल आई वाज करेक्ट, ठीक है। बट द ऑप्शन इज सेइंग कि द पोटेंशियल रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम द मोरल एजेंट। दैट मींस ये वाला केस इस केस का है, इस केस का केस ही नहीं है ये वाला केस ही नहीं है ये। आई नो कि he thinks differently from the moral agent, तो whenever I'll be asking the question I'll get the surefire कि हाँ उसका उसको अपोजिट आंसर मेरे को मिलेगा, राइट। सो इफ ही थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम मी, तो ये वाला लाइक माइंडेड वाला केस नहीं आता है ना। तो इन दैट केस अपोजिट माइंडेड में मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे को पता है कि जब मैं कुछ भी पूछ रहा हूं तो मेरे को उसका उल्टा रिजल्ट मिलेगा। तो इन दिस केस आई एम श्योर, राइट, कि जो भी वट एवर आई एम स्पीकिंग आई माइट नॉट गेट, आई बी गेटिंग द डिफरेंट आंसर फ्रॉम द पर्सन हु इज द रेसिपिएंट ऑफ इट। बट इन दिस केस, है ना, things are uncertain, and when the things are uncertain, I am not sure whether I'll be getting the desired result, where I'll not be getting the desired result. Anything is not possible, and hence it will never be a surefire test to me, right? So that's why the answer should be D, not A. Perfect. Chalo, let's move to the next now.
Done? Okay, Farjan. Okay, Mansi. Okay, Rupali. Okay, Anurag. Okay, Om. Okay, Swarna. Swarna, where were you in the morning? Okay, Swasti. Last 1 minute, guys. चलो देखते हैं. In 1370 CE, the Ming reintroduced the traditional civil service examination system. So we are talking about Ming, which had been an essential path of a social progression in pre-Mongol China and which would continue right into the 20th century CE. Right? So we are talking about the civil services examination. Right. The Ming introduced a geographical quota system so that the richer regions did not, as was previously the case, dominate all the positions in the civil services. Right. So domination reduced domination of civil services cannot happen, should not happen. Right. By the wealthier ones. यही अपना ये है यहाँ तक. Meanwhile, the increase in the number of schools meant children with parents who could not afford private tuition could receive the essential education necessary to prepare for the examination. Success in these examinations required the study of Chinese classic literature, which saw a revival in Confucianism after the Yuan. Right? So we are talking about civil services. It should not be dominated by the wealthier society, wealthier domain of people. Right? Along with that, there were with the help of with the introduction of schools, those who were not getting all the facilities, right, like private tuitions and all, they were also able to prepare for the examination and saw a revival in Confucianism. Revival in Confucianism means what? The social achievements are more preferred. Confucian means in philosophy we use such words like social order is more preferred. These were several developments in Chinese literature during the Ming. Thanks to better printing press, more books were printed than ever. Volumes were illustrated to make them more attractive, and literature was itself made more accessible by being written in the vernacular language. There were books on how to live a good life, handbooks of etiquette, XYZ, military treaties, notes. So, for all the domains, there were books, right? Sui Juhan, Jiu Yu, and Ji Ping were all famous novels written in the vernacular during the Ming Dynasty. The Romance of the Three Kingdoms, written in the 14th or 15th century and often attributed to this, remains to this day one of the most popular of all Chinese novels, with its fantastic tales interwoven with historical figures during the fall of Han Dynasty and the beginning of the Three Kingdom period. Now see guys, I read the complete paragraph in one go, though it was the longest paragraph I have seen. But still I read that in one go. Why? Because I was talking about books were printed. Thanks to the printing press, more books were printed. Now I was talking about books from different domains, be it about wood blocks, anthropologies, erotic works, etc., etc. In all these domains, books or novels were printed. And then I was talking about some novels that got famous. And again, these three kingdoms, etc., etc., were the most popular novels, right? With its fantastic tale, obviously, it's popular due to its tales, interwoven with historical figures due to the during the fall of this dynasty and beginning of the Three Kingdom period. So it is giving me कि printing press आया, books आया, some of the books were became very famous, books were present in all domains, everything was written just like that, right? Now see,
Scripts of the play which traveling troops performed were another popular source of reading. One of the most popular of all plays was The Peony Pavilion by this guy, written in 1598 C. I'll be telling you one thing, when you're reading these types of RCs now, the one thing that you have to keep in mind is keep the chronology intact. Right? We have talked about 14th CE, we have talked about 1550, then we have talked about 20th century CE, 1300 CE, where the Ming dynasty was there, 20th century, the current scenario we are talking about कि जब तक ये लोग आए नहीं थे, फिर novels, when we were talking about the novels, we were talking about the 14th or 15th century CE, right? And when I'm talking about this Peony Pavilion, it is in this CE, written in 1598. So the chronology is important. After this happened, after this happened. It tells the story of a young woman who falls in love with a young man she only meets in dreams. The girl dies of loneliness and buries a portrait of herself in her garden. The young man of the dream then buys the house and finds the portrait, falls in love, and brings the girl back to life through the strength of his affections. Right? So this is narrating or reciting the story of that poem, the book or story, that the Peony Pavilion that became famous. The Youngle Didion was created during the reign of Emperor, a massive encyclopedia. Now till now we were talking about कि हाँ उस समय में बहुत सारे books available थे, novels were available, etc etc. Now I am saying कि encyclopedia was also there, right? Of all Chinese literary work that had survived up to that point. The work, taking up over 22,000 chapters, was too large to be printed, and unfortunately, most of the original was lost in the strife at the end of Ming Dynasty, and that of a copy in a fire during the Boxer Rebellion. Around 800 chapters of the encyclopedia do still exist in various libraries outside of China. Right? So the majority of the portions got lost, right? Due to fire or something, what happened? है ना, ये फायर था कि नहीं था, कॉपी इन अ फायर ड्यूरिंग, नहीं, ये तो एक बुक का नाम है ना. The only essence is that it got lost, but still 800 chapters of the encyclopedia still exist in different libraries of China. So where we started from? We started from what? Literature, the essence of civil services examination, so that it cannot be dominated by the wealthier ones, right? अब civil servant examination की preparation की बात मैंने करी, तो उसमें क्या हुआ कि schools के introduction से वो चीज आसान हो गया, printing press से books were easily available, and then we started talking about what kinds of books etc were present in the Ming dynasty. Along with that, the encyclopedia that we talked about, कि encyclopedia was also there. वहां पे सारी चीजें थी, उसमें से कुछ novels बहुत famous हुए, encyclopedia भी था जिसका majority of the portions got destroyed, but अभी भी around 800 versions are available in the libraries. Right? ये है मेरा पूरा flow. ठीक है, difficult to read but the flow was easy अगर तुम उस तरह से comprehend. एक चीज और देखना गाइस, है ना, मैं जोर जोर से मैं तुमको सीधा जेस्ट भी बता सकता हूँ, क्योंकि तुम जब पढ़ रहे होते आरसी को, मैं भी पढ़ रहा होता हूँ, तो आई कैन डायरेक्टली टॉक अबाउट द जेस्ट. बट द वे आई रीड ना, ट्राई टू रीड इन द सेम वे, तो उससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा यार. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. ओके अनुराग. ओके वर्षित.
Okay, Sanskriti. Okay, Shubhali. Okay, Swarna. Okay, Shnidhi. Okay, Om. Okay, Rupali. Okay, Raman. Okay, Vidisha, Kartikeya, Swasti, Kanchan, Mansi. Okay, Nitesh. Okay, Maitri. Last 10 seconds. All of the following can be inferred about the civil service examination of the pre-Mongol China. First paragraph, let's see. The Ming reintroduced the traditional civil service examination, which had been an essential path of social progression in pre-Mongol China. Social progression. It was a process of developing and moving towards a more advanced state. Yes, it can be inferred, right? Okay. And which would continue right into the 20th century CE. 1370 CE से 20th century CE तक ये चलता चला आया. So it continued until interrupted through several centuries. Yes, right? Now see, as was previously, the Ming introduced a geographical quota system so that the richer regions did not, as was previously the case, dominate all the positions in the civil service. Right. Meanwhile, the increase in the number of schools meant children with parents who could not afford private tuition could receive the essential education necessary to prepare for the exam. Right. Success in these examinations required the study of Chinese classic literature, which saw a revival in the Confucianism after the Yuan. Right. Revival after the Yuan. Right. It saw the revival after the Yuan. Matlab, during the Yuan it wasn't the case. Now let's see. It continued uninterrupted. It was discontinued during the reign of the Yuan dynasty. Yes, might be the case. D might be the answer, right? कि डी भी जो दिया हुआ है वहां पे वो हम लोग इन्फर कर सकते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सेप्ट. Now let's see. It helped to do away with the domination of richer regions in the civil services. Meanwhile, quota system so that the richer regions did not dominate all the positions in the civil services examinations. So we are not talking about ki it did away with that. It did away with some of the positions, not completely the civil services examination. Right? So that's why when we are talking about the except question, the answer should be B, and all of you were wrong in it. Just because you didn't carefully read this word, saw a revival in Confucianism after the Yuan. Many of you marked D. Got it? If you have any doubts, please ask. If sorted, type a S. And it was a tricky question, guys. Not difficult, but trap wala question tha. If sorted, repeat कर दीजिए. कहाँ कौन सा पोर्शन बच्चा? Where we are lagging, मतलब वो, how did I come to D in that case basically? You came to D just because यहाँ पे क्या दिया है कि success in these examinations required the study of Chinese classic literature, which saw a revival after the Yuan. Right? That means during Yuan the revival wasn't there. Option D तुम्हारा क्या बोल रहा है? It was discontinued during the reign of the Yuan dynasty. So this you can infer from the paragraph.
अब Right. अगर मैं ऑप्शन बी पे आता हूं, इट हेल्प टू डू अवे विथ द डोमिनेशन ऑफ रिचर रीजन्स इन द सिविल सर्विसेज, नॉट इन द सिविल सर्विसेज, सर्टेन पोजीशंस ऑफ द सिविल सर्विसेज. Okay. Okay. Right? Dominate all the positions in the civil services. Got it? So that's why this we cannot infer. Whereas this we ठीक. can infer, except tha, so B should be my answer. Right? चलो let's move forward, है ना? थोड़ा सदमा बर्दाश्त करो, अभी आगे भी झेलना है. सबने धड़ल्ले से मार्क किया था डी 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 लास्ट क्वेश्चन में. ओके वर्षित. ओके शिवाली. ओके अनुराग. ओके ओम. ओके मैत्री. गुड जॉब नितेश. ओके संस्कृति. आदर्श. ओके स्वर्णा. लास्ट 30 seconds guys. ओके कार्तिकेय. ओके रूपाली. इसी तरह से अगर तुम लोग डेली अभी से कैट तक 5-6 आरसी डेली कर लोगे ना, तो तुम्हारा जिंदगी शॉर्ट हो जाएगा. मैं अभी भी बता रहा हूँ. ओके रूपाली. ओके मानसी. ओके स्वस्ति. और उसके लिए बेस्ट सोर्स है सेक्शनल्स यार. सेक्शनल्स जितना ज्यादा दे दोगे ना चीजें, और जो भी रहता है, जो भी डिस्कस करना होता है, मेरे को बोल दो, मैं बैठ जाऊंगा ना डिस्कस करने को. ठीक है, चलो देखते हैं. पैसेज मेंशंस द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन चाइनीज लिटरेचर ड्यूरिंग द मिंग, एक्सेप्ट. राइट, अगेन एक्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. 3 आंसर्स आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग. ठीक है, तो डेवलपमेंट्स इन चाइनीज लिटरेचर. Spread of Chinese literature led to widespread basic education.
बेसिक एजुकेशन, आर वी टॉकिंग अबाउट बेसिक एजुकेशन? ये सारी चीजें हुई थी किसी चीज के लिए? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। डिड वी टॉक एनीवेयर अबाउट द बेसिक एजुकेशन? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे क्या था? थैंक्स टू बेटर प्रिंटिंग प्रेस मोर बुक्स वेर प्रिंटेड, volumes were illustrated, etc., etc. Literature was itself made more accessible. There were books on how to live a good life, handbook of etiquette, this about a group of well-meaning bandits and Jin Ping Mei XYZ. So all these famous novels, something on that front, right? Essential education necessary to prepare for the examinations. But are we anywhere talking about basic education? I don't think so. What's the definition of basic education? I'll have to keep this out. Keep it on hold. Books became more accessible and appealing. Yes. Printing press आया, books were accessible, books were attractive. लिखा हुआ था कहीं पे, right? कि were printed, volumes were illustrated using wood to make them more attractive. ये directly mentioned था. So B is mentioned in the passage, so this will be eliminated because we are asking the except question. Classic and vernacular literature saw a revival. अगेन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बुक्स वेयर प्रिंटेड, यहाँ पे क्या दिया है? देयर वेयर बुक्स ऑन हाउ टू लिव, बुद्धिस्ट, जिनपिंग एटसेट्रा। और वर्नाकुलर मीडियम वाला भी हम लोगों ने कहीं पे डिस्कस करा है, राइट? आई हैव रेड दैट वर्ड, मेरे को जहां तक याद है। बुक्स वेयर प्रिंटेड इन वर्नाकुलर मीडियम, आई डोंट नो वेयर, बट Second paragraph, third line. Volumes were illustrated and literature was itself made more accessible by being written in vernacular medium. There were books on. So is it revived? I'll have to keep it on hold again. Right? Folk literature produced masterpieces written in this period. Obviously, it is directly written ना कि these written in the 14th or 15th century, है ना? यहाँ से लेके तुम्हारे पास इस जगह पे भी पियोनी पेविलियन आया था. These were the masterpieces we were talking about, right? है ना? तो again this option is mentioned, so this will be eliminated. Now I am confused between option A and option C, right? Classic and vernacular literature saw a revival. Spread of Chinese literature. So यहाँ पे revival वाली अगर मैं बात कर रहा हूँ, Chinese classic literature were revived, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, right? So that means again this is also mentioned in the passage. So this option will be eliminated because except question पूछा गया, तो E should be my answer in that case. Sorted type S, many of you were correct, है ना? But some of you were wrong too. If sorted type S, we can proceed to the next question. सर एक की रीजनिंग फिर से आप बता दीजिए एक बार। क्या बेसिक एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? बेसिक एजुकेशन हम लोगों ने सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए बात किया है, बेसिक एजुकेशन के हम लोगों ने कहीं भी बात नहीं करी। दैट्स व्हाई सर इसका रीजनिंग जो मैंने मार्क किया था वो ये सोच के किया था कि इसमें जो लिखा हुआ है वो जो पैसेज में दिया है उसका कन्वर्स है। पैसेज में दिया हुआ है कि बेसिक एजुकेशन की वजह से ही चाइनीज लिटरेचर का रिवाइवल हुआ है, लेकिन इसमें उसका कन्वर्स दिया हुआ है, तो ये लॉजिक सही नहीं है क्या? नहीं, कहाँ पे दिया हुआ है बेसिक एजुकेशन के कारण इसका रिवाइवल The हुआ है? first passage में last line में success in this examination required the study of Chinese classical literature which saw revival because of these So again, you are examinations. talking about Chinese classic literature, right? You are talking about success in these examinations like civil services examination, right? But are we defining the basic education? Are we talking basic education का definition क्या हो सकता है? कुछ भी हम लोगों ने इसके बारे में तो बात भी नहीं करी है ना. Maybe we are talking about the education given to the 10th class standard guys or before that. That might also be. There was some talking about on that paragraph कि education in the schools were easily accessible. Yes, so in the schools, those schools were majorly focused upon civil services examinations. Again, that's what I am talking about. Ki the examination that I am focused on is civil services examination. तो बेसिक एजुकेशन को तो हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं करा ना, समझा? थोड़ा सा अभी भी है सर। क्या है बताओ ना। थोड़ा सा ही देख, मेरे कहने का सिंपल सा चीज है कि जब वो बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा है तो बेसिक एजुकेशन इज अ जेनरिक टर्म,
ठीक है, जिसको हम लोगों ने पैसेज में कहीं भी पूरे पैराग्राफ्स में, चारों पैराग्राफ्स में कहीं भी डिस्कस नहीं किया है कि व्हाट माइट बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक एजुकेशन, दैट्स व्हाई दैट माइट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। बस इतनी सी बात है। ओके ओके राइट, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत देर के बाद सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन आया यार। ओके वर्षित, ओके अनुराग, ओके ओम, ओके वर्षित, ओके शुभाली, ओके स्वस्ति, ओके नितेश, ओके रूपाली, ओके मानसी, फरजान, मैत्री। आई हैव गॉट एन ABCD। शाबाश, पैसे डिस्क्राइब कर रहा, सेंट्रल आइडिया पूछा, चारों आंसर मार किया तुम लोगों ने, कितने होनहार लोग हो। वही बात है, एक तो सही होगी, किसी का तो सही होगा। ओके रमन, ओके सुनिधि, ओके मैत्री। हाँ, लास्ट 15 seconds guys, wrap it up। ओके कंचन, ओके जस्ट रुक जाओ, वेट। दोज हु हैव मार्क्ड डी, तुमसे बड़ा बेवकूफ गधा कोई है ही नहीं। सिर्फ चाइनीज लिटरेचर ऑफ 14th सेंचुरी की बात हम लोग कर रहे हैं क्या पूरे पैसेज में? 1370 से लेके 2000 तक चला आ रहा है, सारी चीजें जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ 14th सेंचुरी को हाउ कैन यू मार्क, वो भी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज में? चीजों को समझो यार, कुछ भी मार्क थोड़ी ना कर सकते अपन। पढ़ लिया पहले 2-4 लाइन में पढ़ लिया चाइनीज लिटरेचर ऑफ 14th सेंचुरी, मार्क कर दिया, बढ़ गया आगे, ऐसे थोड़ी होता है। ऑप्शन ए विल बी एलिमिनेटेड, नो सॉरी, ऑप्शन डी विल बी एलिमिनेटेड। Origins of the civil services examination system in China. Okay, we have talked about it. यहाँ से हम लोगों ने पूरा उसी के बारे में बात करा है, right? कि Ming introduced the traditional civil services examination, reintroduced the traditional civil services examination, right? That means it was there, but it took a halt. Then again they reintroduced. So origin of the civil services examination कहाँ से आ गया? रीइंट्रोडक्शन हो रहा है, दैट डजंट मीन ना कि ओरिजिन की बात है। तो ऑप्शन सी डायरेक्टली यहां से एलिमिनेट होगा। कल्चर एंड साइंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मिंग, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ द मिंग डायनेस्टी। नो, डिड वी टॉक एनीथिंग अबाउट साइंस? नो, नॉट एट ऑल। तो दिस विल बी एलिमिनेटेड। नाउ कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ द मिंग डायनेस्टी, हाउ कैन वी डिसिफर दिस आउट? with the help of the achievements that we got, the literary achievements, the सारी चीजें यहाँ पे देखो, राइट? यहाँ से जो इसने बात करनी शुरू की है, बुक्स ऑन हाउ टू लिव, हैंड बुक्स ऑफ एटिक्वेट्स, क्लासिक टेक्स्ट, कोर्स, फिक्शन, नॉवेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स, रोमांस ऑफ 3 किंगडम्स, राइट? ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द अचीवमेंट्स दैट दे हैव गॉटन। उसके बाद और ये लाइन क्या बोल रहा है कि सेवरल डेवलपमेंट्स इन चाइनीज लिटरेचर ड्यूरिंग द मिंग,
राइट। फिर यहाँ से आते हैं हम लोग पियोनी पवेलियन पे, द रोमांटिक नॉवेल दैट इट वाज। देन वी टॉक्ड अबाउट encyclopedia of all important Chinese literary works that were there. So all these are what? All these are kind of an achievement that they have gotten, right? So that's why option A kind of circumscribe the whole paragraph 1, 2, 3 and 4, all of them. और अगर वो चीज नहीं भी समझ में आता तो ऑब्वियसली अदर 3 ऑप्शंस were directly eliminated. So option A should have been my answer. And those who have marked C and D, please, you have to reconsider your thought process. You have to reconsider how you read the passages. It's very important for you. अब मैं हंस देता हूं बट आई एम सीरियसली कंसर्न्ड। कुछ आंसर्स मेरे को इरिटेट करती हैं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, कुछ आंसर्स मेरे को बहुत गंदा इरिटेट करती हैं। कुछ भी मार्क कर रहे हो यार। पहला लाइन पढ़ा, जो मन में आया मार्क कर दिया, डायरेक्ट देखा मार्क कर दिया, ऐसे में तो कभी सही नहीं होगा। लेट्स, मम्मी कॉल आ रहा है, जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके, इसको या right. If sorted type S, perfect. Let's move to the next question then. Easy question, pretty easy. Okay, Varshit. Okay, Om. Okay, Shanidhi. Okay, Anurag. Okay, Kanchan. Okay, Shubhali. Okay, Shwarna. Okay, Shaunak. Okay, Shwasti. Okay, Rupali. Okay, Kartikeya. Okay, Nitish. Almost all of you are correct. बहुत आसान सा था. Last 10 seconds if you want to wrap it up. Within 30 seconds I would have gotten the answer for this. ये विदिशा थप्पड़ खाने वाला काम मत कर, ठीक है? क्लियर लिखा है यार कि उतने सारे चीज इतना ज्यादा था कि उसको प्रिंट नहीं कर सकते थे। क्या कर रही है तू? यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, क्यों मार्क कर रही है डी? मेरे को ये बता। नहीं सर, मुझे लगा कि उस स्टेटमेंट का मतलब है कि वो बहुत लार्ज है टू बी प्रिंटेड, बट इट वाज प्रिंटेड। मेरे को वो लगा स्टेटमेंट हाँ, से। टेकिंग अप ओवर इतना चैप्टर्स वाज टू लार्ज टू बी प्रिंटेड, इसका मतलब ये है कि इतना लार्ज है कि इसको प्रिंट नहीं किया जा सकता। समझी? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो could not be printed for its massive size, given है listed the works of literature in China up to Emperor Yongle, given है reflect the extent of Chinese literature 2200 इसका था, ये भी given है, right? है ना? The only remnants of it exist in China, again extreme. So option A will be the answer. Sorted? So you had gotten it wrong, almost all of you got it correct, but जिनका जिनका विदिशा समझ गई, स्वर्णा समझ गई,
हाँ सर। ठीक है ना? चल नेक्स्ट चलते हैं। थक गया हूँ यार, लेकिन चलो कर लेते हैं ये वाला भी। अगेन द आरसी इज विथ यू गाइस, है ना? एक काम करो ना, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर ये आरसी को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जस्ट 5 minutes ऑफ ब्रेक एंड देन विल बी कंप्लीटिंग दिस आरसी एंड देन विल इट विल बी कंप्लीटेड, राइट? जस्ट 5 नहीं 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं अभी। इट्स 4:40, विल स्टार्ट शार्प एट 4:50 गाइस, है ना? तो आधे 40 मिनट 45 मिनट में ये आरसी भी कवर हो जाएगा, तो सारी चीजें खत्म भी हो जाएंगी, है ना? चलो अभी कहीं जाना मत, यहीं पे रहो, 10 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे अपन। सर एक रिक्वेस्ट था, इफ यू हाँ। कैन शेयर द पीडीएफ। अरे ये कर चुका हूँ नहीं ये। नहीं, आपने व्हाट्सएप पे भेजा ना, तो उसमें मतलब पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसका पीडीएफ मैंने बनाया नहीं था, मैं बना के भेज दूँ क्या? ठीक है, रुक जाओ, चलिए। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, है ना? मिल गया? मिल गया क्या? नहीं नहीं, अभी गया नहीं, जस्ट अ सेकंड वेट, जा रहा है। डन शेयर्ड, मिल गया सबको? भाग गए क्या सब? नहीं नहीं सर, अभी तो मेरे को दिख नहीं रहा, एक मिनट। चेक कर। ये आपने वीटू वाले ग्रुप पे डाला है? सारे में डाल दिया, तीनों में। हाँ, मिल गया मिल गया। ऑल ऑफ यू आर हियर, ऑल ऑफ यू आर हियर। ओके, ओम किशोर ना, परफेक्ट। Yeah. So should I directly start? If you would have read this, so should I directly start or you want time to read? Guys, do you want time to read this RC or we can start directly? Time to read.
Okay, Srinidhi. Okay, time to read Mansi. Okay, others. ठीक है पढ़ लो फिर. I can understand. पढ़ लो. हाँ, मैं समझ गया, तुम लोग भी ब्रेक पे चले गए. ओके, तो पढ़ा नहीं होगा. आज तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही साइंस पढ़ लिया. साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो फिर भी ठीक है, नॉन साइंस स्टूडेंट्स आर लाइक क्या यार. डन. Done. Should we start? Last 1 minute, wrap it up.
Sorted? Perfect. चलो देखते हैं. The use of man-made nanoparticles had spread into almost every area of our lives. Food, clothing, medicine, shampoo, toothpaste, sunscreen, XYZ. Right? So use of nanoparticles, we have talked about the usage of nanoparticles. Regulatory structures, both here and abroad, are completely unprepared for this onslaught of nanoproduct. Right? Regulatory structures are unprepared for this onslaught, means the structures that have been made, they are not prepared for this explicit usage of nanoparticles at all the places, because they don't fit into traditional regulatory categories. Additional companies often shield details about them by labeling them proprietary. They are difficult to detect. We don't have protocols for judging their effects, and we haven't even developed the right tools for tracking them. Right? So why are we concerned? Because we are not very sure about their effects, and we don't have the perfect tools to track them out. As with many things that are invisible and difficult to understand, think subatomic particles such as Higgs boson, muons, gluons, quarks. Any discussions of nanoparticles quickly shift into the realm of metaphor and analogy. Obviously, when we are not too much, we don't have that too much detail of it, we use the metaphorical representations of the analogy of it. Right? People working in nanoscience seem to try to outdo each other with folksy explanation that might be true, might not be true. Looking for a nanoparticle is like looking for a needle in the Grand Canyon when the canyon is filled with straw. वही घास के अंदर सुई ढूंढना, something on that front. If that means a very difficult task, looking for a nanoparticle is a very difficult task, the author wants to say. If a nanoparticle were the size of a football, an actual football would be the size of New Zealand. It gives you the visual presentation of it, how small it is. A million nanoparticles could squeeze onto the period at the end of this sentence. That means this can imbibe or embed a million nanoparticles in itself. Again, the visual representation, key nanoparticles are how small. They exist in nature, but they can also be manufactured. Right? One way is top down, grinding up things that are big until they are really small. An approach used in nanolithography for electronics. Or you can make them from the bottom up, following instructions that read like a chemistry textbook, mixing one chemical with another by pyrolysis or with electrolysis or by other means. That means for they are naturally found too. Right? Simultaneously they can be manufactured. How they can be manufactured? There are two processes for that. टॉप डाउन. राइट? टॉप डाउन में क्या है कि बड़े पार्टिकल को क्रश करते 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 छोटा बना दिया, या छोटे पार्टिकल को क्या किया, मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइसिस या पैरालाइसिस के थ्रू वी गेट द नैनो पार्टिकल्स. तो ये हो गया मेरे पास क्या, बॉटम अप. राइट? कि छोटी चीजों को मिक्स करके हम लोगों ने बड़ा सा केमिकल बना लिया. ठीक है? तो but what do they look like? Like many dots of light that I am reminded of staring up at the Milky Way on a trip across the Tibetan plateau years ago. Yet the silver dots throb and undulate as if alive. Here and there, giant spears of dust as large as this porpoise through the nanoparticles. This world is so close, it's even inside me, yet it looks so other, so mysterious. So all the places, at all the places that I am describing, I am trying to gather the visual representation. ये कितना छोटा हो सकता है, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Scientists don't really have a full theoretical foundation to explain reality. First paragraph में हम लोगों ने पढ़ा, right, कि full explanation हमारे पास है ही नहीं, full knowledge है ही नहीं. But all agree that one of the most important aspect of nanoparticle is that they are all surface. Consider a conventional chemical process. When one element is reacting with another, it's really just the surface molecule that are involved in the lock and key dance of classical chemistry. The vast majority of the molecules remain interior and stable,
but there are many fewer molecules in a nanoparticle, so most of the molecules are on the outside, thus rendering nanoparticles more reactive. अब ये क्या बता रहा, अगेन केमिकल प्रोसेस है, थोड़ा सा इट माइट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट what it says, the gist is that chemical particles are more reactive. Now why is it more reactive? Because अगर कोई भी केमिकल को लोगे तो the initial part, the surface part reacts, right? बट नैनो पार्टिकल इतना छोटा है कि उसमें सारी चीजें जो है वो सरफेस पे ही रहती हैं, और सरफेस वाला जितना भी पार्ट होता है केमिकल और प्रॉपर्टी में वो रिएक्ट कर जाता है। नैनो पार्टिकल में चूंकि सारे पार्टिकल्स सरफेस पे ही, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑन द सरफेस, तो दे विल बी ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव। Myriad surface imperfections cause randomness to dominate the nano world. If you hit a billiard ball with a clean shot at the macro level, you can have a good idea where it will go. But at the nano level, a billiard ball might shoot straight up or even reverse direction. So again, it is talking about the unclear mindset. Unclear mindset, not mindset, but unclear. क्या बोल सकते हैं, verification part of it. कि exactly how will it react? These bits of matter are hot to trot, ready to react, to bond and to do so in unpredictable ways. Obviously yes, आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, even reverse direction बोल ही रहा है, तो it's not predictable. While man-made nanoparticles have entered every area of our lives, scientists are still to understand them, and regulatory authorities are unprepared to meet the challenges. राइट सो अभी तक में हम लोगों ने बात किया क्या, वी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, वी इंट्रोड्यूस्ड द नैनो पार्टिकल्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही नैनो पार्टिकल्स को हमने बताया, सबसे पहले क्या आया कि हम लोगों को प्रोपराइटरी आ जाता है, मतलब रेगुलेटरी चैलेंजेस। वी टॉक्ड अबाउट द रेगुलेटरी चैलेंजेस, राइट, कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी माइट फेस ड्यूरिंग द रेगुलेशन। उसके बाद we started talking about what nanoparticles are, how we can understand exactly, though it is difficult to understand, but we started understanding what they are, right? Then we talked about how it is being created, the top down approach, or the bottom up approach, or the top down approach, right? So it gave me an explanation towards what, कि how it is created, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, देन वी डिस्कस्ड अबाउट की सो मिस्टीरियस, उसके बाद हम लोगों ने सरफेस मॉलिक्यूल्स, राइट। तो अब उसके बाद हम लोगों ने व्हाट वी डिस्कस्ड द अपीयरेंसेस ऑफ इट, ठीक है, कि दे आर मेजरली ऑन द सरफेसेस एंड दे रिएक्ट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंसेस, वहां पे मेरा क्या है कि रिएक्टिव परसेप्शन, राइट। Then or else I can also write about the surface reactivity of it, nanoparticles, and at last what the author had said, ki it is unpredictable in nature, right? And there are still many measures to take to meet the challenges. So unpredictability of it, right? Let's move to the question. Easy question. सी मैं तुमको बताऊं, इन टाइप के आरसीज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, कि यू कैन, मतलब द आंसर्स विल बी मोर ऑफ, मोर लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, द क्वेश्चंस विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। संस्कृति, प्लीज चेंज योर सेटिंग्स। इन गलत आंसर देने के लिए धन्यवाद।
Okay, Farjan. Last 10 seconds, guys. शुभाली, अबे कॉपी मत कर, गलत है संस्कृति का, मैं बता रहा हूँ शुभाली, क्यों कॉपी कर। चलो देखते हैं गाइस, है ना। What it says, according to the passage of the discussion of nanoparticles, shift एक सेकंड कोई डांट खाने वाला काम किया है। यस रूपाली, कहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा कि लेमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड? इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड, अंतर होता है। Yes, sir. तो क्यों मार्क करा वो ऑप्शन? Because और options नहीं लग रहे, they do not really exist, तो possible ही नहीं है, first वाला भी नहीं है। ये तो सबसे पहले एलिमिनेट होगा। दे आर फिगरेटिवली एंड डू नॉट रियली एग्जिस्ट, ये भी सबसे पहले एग्जिस्टेंस तो है ही, वो तो बी तो exist सबसे है। पहले ये होगा, हाँ, ए एंड डी, राइट। दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस एंड ग्रास्प, ठीक है। कॉमन, व्हाट आर द कॉमन एक्सपीरियंसेस वी हैव सीन, एक तो मेरे दिमाग में ये आएगा, एंड सेकंड इज कि दे आर सिमिलर टू हिग्स बोसॉन मोन ग्लोन क्वार्क्स, राइट। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे गया, ये एक्स वाई जेड कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, as with many things that are invisible and difficult to understand, think subatomic particles such as this any discussions of nanoparticles quickly shift into the realm of metaphor and analogy, right? तो जिस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि जब हम लोग हिग्स बोसॉन मुऑन ग्लूऑन और क्वार्क के बारे में बात करने लगते हैं, उसी तरह जब भी हम नैनो पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, वी ट्राई टू शिफ्ट आवरसेल्व्स टुवर्ड्स मेटाफर एंड एनालॉजी। Does that mean that Higgs boson, muon, gluon are similar to nanoparticles? No, not at all, right? We are talking about the conversation कि जब भी ऐसे conversations आते हैं ना, we try to delve towards metaphors and analogy, right? Similarly, अगर यहाँ पे तो this option will be eliminated. Option D, they are beyond the scope of common experience and grasp. कॉमन एक्सपीरियंस क्या, नॉर्मल पार्टिकल्स, अब वो क्या बोला कि ये इतना छोटा है कि थिंक अबाउट इट कि अगर ये फुटबॉल की जितना हो गया तो ये जो है नॉर्मल पार्टिकल जो है वो फुटबॉल क्या होगा, वो न्यूजीलैंड के जितना हो जाएगा, तो दैट इज सो स्मॉल। एंड अनदर थिंग इज दैट वी हैव अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट, हम लोगों ने बोला है ना कि रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स, वी हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेगुलेटरी, ट्रेडिशनल रेगुलेटरी कैटेगरीज, बट दे डोंट फॉल इन दैट, right? So that's why the what I am talking about, the common experience, the regulatory structures, right? But they are beyond the scope of common experience, they are not falling into this category, and hence it is difficult to grasp them out. So obviously yes, we are talking about it, so option D should be the correct answer. Got it, Rupali? yes, sir. Those who had marked it wrong, did you get it? If sorted, type a S, guys, we can proceed to the next question. Perfect. Let's move to the next question. And I really liked the way you guys uh, were astute in the whole conversation. ठीक है, I really liked that. इतना कंसंट्रेट होके कर पाना, आई नो इट्स डिफिकल्ट, लगातार 3-3 घंटे के 2 सिटिंग्स लेना डिफिकल्ट है, खास करके वीएआरसी में, बट स्टिल द वे यू गाइस ग्लूड, इट शोज कि यू हैव दैट एटीट्यूड, गुड थिंग।
हाँ हाँ, संस्कृति तुम्हारा सही था। कार्तिकेय प्लीज एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है बच्चा उसमें? मैं अभी देखा तेरा मैसेज। मैं बोल रहा हूँ कि दे आर सिमिलर टू हिग्स बोसोन, समझ गया क्या कार्तिकेय? समझ में आ गया था ये आंसर, या फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं? आई सॉ द चैट राइट नाउ। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, एक क्यों नहीं होगा? मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी हिग्स बोसोन मुऑन्स, ये सारी चीजें हम लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये करते हैं ना, शिफ्ट इनटू मेटाफर एंड एनालॉजी, जब भी हम लोग इस साइड शिफ्ट करते हैं, राइट, कि हमारा नैनो पार्टिकल्स, डिस्कशन ऑफ नैनो पार्टिकल शिफ्ट इनटू मेटाफर एंड एनालॉजी, जब हमको कोई भी चीज समझ नहीं आती है ना, तो हम लोग इस डायरेक्शन में स्विच कर जाते हैं, right? But does that mean that nanoparticles are similar to Higgs boson, muon, gluon और quark? No. चीज मेरे को अगर मान ले कि मेरे को VARC के रैशनल समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो आई शिफ्ट बाइसेल टुवर्ड्स क्वांट, तो इसका क्या मतलब हुआ? VARC और क्वांट सेम है? नो सर, नो। दैट्स द थिंग, है ना? चल 30 seconds guys, 30 seconds, not 1 minute more. ओके शुभाली, ओके फरजान, ओके स्वर्णा, मानसी, मैत्री, शौनक। ओके अनुराग, ओके विदिशा। चलो देखते हैं, है ना, कि all of the following are constants in the regulation of nano products, ठीक है, except, मतलब 3 of them are the constants, one is not a constant, right? One option is not a constant. I have to find this option only, right? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि regulatory structures both are completely unprepared for this onslaught because they don't fit into traditional regulatory category, right? Often companies often shield them about them by labeling them proprietary. They are difficult to detect. We don't have protocols for judging their effects, and we haven't even developed the right tools for tracking them. ठीक है, तो since the things that we discuss about these nanoparticles are very illusional in nature, right? तो obviate का मतलब क्या होता है ना, कि they are eluded, मतलब they are escaped. So definition of nanoparticle escapes their inclusion in distinct governable group, है ना? तो चीजें इसको इस तरह से they are describing it as proprietary, तो obviously governments are trying not to include them in their normal structural pattern, right? So this option is a constraint for sure. Why? Just because की proprietary है, इसका explanation मेरे को exact explanation पता ही नहीं है, तो how can these be included in the groups, right? So this might be a constraint. There are too many nanoparticles to deal with and too little technology to cover them. Yes, there are many nanoparticles that might be a constraint. Regulatory structures were caught wrong-footed by the deluge of nano products. Yes, regulatory structures were not prepared for it. When nano products will be coming, they were not prepared how they have to tackle it. So that might be a constraint again. The absence of proper infrastructure provides loopholes for devious companies to manipulate. Yes, companies are manipulating just because we don't have significant infrastructure. So again, this might be a constraint. So if all of them are constant, I'll have to be very cautious, right? Let's see
Option A is directly eliminated, D is directly eliminated, right? Now there are, B says there are too many nanoparticles to deal with and too little technology to cover them. Okay, B should be my answer. Why? Just because it says that too little technology to cover them up, है ना? तो we have not talked about the limitations of our technology, right? यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? Too many nanoparticles and too little technology. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, कि technologies are not that much advanced. अभी हमारा ये जो है उतना एडवांस नहीं हुआ है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टू लिटिल टेक्नोलॉजी ना, मतलब कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, right? When it is saying कि we have too little technology, this means too little technology. क्या होता है? Little, or little, the little, right? Little means almost none, है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Too little technology to cover them. That means almost we don't have any technology. लेकिन ये चीज हम लोगों ने पैराग्राफ में बात नहीं करी है. मैंने बोला we what we have discussed is कि the technologies that are available, है ना, they are facing challenges to deal with this nanoparticle. But if you are saying कि they are almost negligible, so that might not be a good representation of the fact. So that's why option B will be eliminated, and option B should be my answer. Sorted? Type S. Perfect. Perfect. Which of the following can be? चलो ये दो क्वेश्चन कर लो गाइस, ये क्वेश्चन कर लो, है ना? अभी टोन वाले इस क्वेश्चन को अभी रहने देंगे, क्योंकि मैंने अभी टोन कराया नहीं है क्लास में, है ना? ये अभी रहने देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी एक तुम लोग का एक कंप्लीट क्लास टोन पे होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट. बहुत सारे टाइप्स ऑफ टोन्स होते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग. और वो अभी इसलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि अगर शुरू में करा दूं तो फिर भूल जाओगे, और वो चीजें, इट्स अ थ्योरेटिकल थिंग. तो लास्ट में सारे टाइप ऑफ टोन्स लिखा दूंगा, वो एक नोट्स में रहेगा, तो यू कैन रिवाइज दैट आउट. ओके शिपाली. ओके सुनिधि. फिफ्थ पैराग्राफ है क्या भाई? फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके.
देखो ये तो completely out of scope हो जाएगा मेरे लिए, है ना, कि fewer molecules in nanoparticles, right? Now, scientists have enough theoretical knowledge to describe the nature of nanoparticles. Scientists don't really have a full theoretical foundation to explain reality at this scale, but all agree that one of the most important aspects is that they are all surface. Consider a conventional chemical process when one element is reacting, it's really just the surface molecules, ठीक है, ये the vast majority remote interior, but there are many fewer molecules, so most of the molecules are on the outside, hence they are reactive. So myriad surface imperfections cause randomness to dominate the nano world. If you hit a billiard balls, then you can have a good idea. But the nano, ठीक है, reverse वाला, what do they look like? Milky Way on a tip, ठीक है, ये the silver dots here and there, giant spheres of dust with or boys through this world really so close it's even inside me. It looks so other, so mysterious. So, not scientists have enough theoretical knowledge. I guess it shouldn't be the case, right? They don't have enough theoretical knowledge to describe ऐसा बोला जा रहा है. Not all scientists agree with the foundational principle of nanoscience. Did we talk about other scientists? We don't really have to. Not all scientists वाला केस तो मेरा एसेंस है नहीं, है ना. Agree with the foundational principles of nanoscience. This is not the essence of mine कि not all scientists agree with the foundation principle of nanoscience, right? ये हम लोगों ने कहीं बात ही नहीं करा है कि scientists are not agreeing with the nanoscience or not. ये हम लोगों ने कहीं भी discuss नहीं करा है, तो obviously it will be eliminated. Classical chemistry cannot fully explain why nanoparticles are more reactive. Why they are more reactive ये तो explain किया गया है ही मेरे को, है ना. Classical chemistry, is it the case of classical chemistry? Conventional chemical process, yes, so it's a classical chemistry and it gives me ki haan, why it is more reactive. So again we can infer this out. So the cannot explain is not a good thing to decipher, so all the options are eliminated here. Sir, actually C में the example is given that conventional chemical process is in which surface molecules are involved in lock and key dance of classical chemistry. So whereas in that the molecules are interior and stable, but there is but here. So but in nanoparticles molecules are less, material is less. That's why they are more on outside, rendering them more reactive. मेरा है कि it's Hence, really classical chemistry wait. cannot explain it reactive. It's wait, reactive. wait, wait. It's really just the surface molecules that are involved in the lock and key dance of classical chemistry. Vast majority of molecules remain interior and stable, but there are many fewer molecules in a nanoparticle. So most of the molecules are on the outside, thus rendering nanoparticles more reactive. It makes nanoparticles more reactive. तो ये जो concept of classical chemistry है तो मेरे को explain करके दे ही रहा है. ये तो मेरे को explain करके दे ही रहा है ना कि why they are more reactive. मैं वो बोल रहा हूँ. नहीं, पहले इसमें कन्वेंशनल केमिकल प्रोसेस के बारे में बोला है. So अरे it वहां is से not छोड़ तू यहाँ से it तू is not correlated to बच्चा nanoparticle. यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, तेरे को वो आंसर सीधा दिख जाएगा. None of them. All scientists only agree with one aspect of foundation. That also means there are a lot that they don't agree with. I didn't get you, Varshit. Which option are you marking? B. ये साइंटिस्ट का एस्पेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कहाँ करा है बच्चा? While man made etc etc. नहीं यार. सर वो फर्स्ट पेनल्टीमेट में फर्स्ट सेंटेंस जो है, Myriad surface imperfections cause randomness, यही वाला ना? साइंटिस्ट डोंट रियली हैव ए थियोरेटिकल, इसके जो सेंटेंस में ठीक है. क्लासिकल आता है, साइंटिस्ट डोंट रियली हैव ए फुल Have a थियोरेटिकल full. एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन द रियलिटी एट दिस स्केल, बट ऑल एग्री. यहाँ पे ऑल एग्री साइंटिस्ट को ही तो बता रहे कि सब है, लेकिन उसमें से एक जो है जो सब लोग
मानते हैं वो ये You gave me the answer. What should be the answer? बी है ना। Now see why. You gave me the answer. मेरे को वही confusion आ रहा था कि all the options were getting eliminated, but यहाँ पे क्या है? See what it is saying me out कि scientists don't really have a full theoretical foundation to explain reality at this scale, right? But all agree that one of the most important aspects of nanoparticle is that they are all surface. Consider a conventional chemistry, and with the help of this understanding, they have interpreted how they interact, what are the things that they do, what's the size, etc., etc., etc. Okay, so that means what? Ki if this option is saying ki have enough theoretical knowledge to describe the nature of nanoparticles. They don't have full knowledge about it, but उनके पास इतना knowledge है कि they have talked about the size of nanoparticles, they have talked about the reactivity of nanoparticles, they have talked about each and every chemical chemistry, chemical properties, etc., etc., and the randomness of those nanoparticles. तो इतना idea उनके पास है ना? That's why A will be the most suitable answer in this case. अगर कहीं डाउट हो तो पूछ लो. If you have any doubts, please ask. If sorted, type a S. And you gave me the answer, Vasit. I was literally confused कि हाँ अब अपने जिनको भी B लग रहा था ना, अपने rationals को रख सकते हो. Varshit, now are you clear? Perfect. And literally this was trickiest यार. It was trickiest one, है ना? और वर्षित ये तू हिंट मेरे को नहीं देता ना, मैं इस आंसर तक पहुंचने में पहुंच तो जाता, बट पहुंचने में टाइम लगाता कि सारे ऑप्शंस अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट दिया हुआ था यार कि दे डोंट हैव इनफ मतलब अंडरस्टैंडिंग. ये डायरेक्ट तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था पहले गो में. ठीक है, बट एज सुन एज यू सेड दैट ना मेरे को क्लिक कर गया कि आंसर शुड बी दैट वन ओनली. हाँ कोई कुछ बोल रहा था. एनीवन वाज सेइंग एनीथिंग राइट? चलो सॉर्टेड गाइस, है ना? ये क्वेश्चन अभी मैं छोड़ रहा हूँ. ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ टोन इसका क्या है. टोन इसका फैक्चुअल येट स्पेक्युलेटिव होगा. क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा जब मैं ये सारे टोन्स अपन डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि एक्जुबेरेंट क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, एम्पिरिकल एक्जुबेरेंट क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, एम्पिरिकल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव क्या होता है. ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट. ये क्या है कि इसने फैक्ट्स बताया कि नैनो पार्टिकल आज के डेट में अवेलेबल है, फिर उसके बारे में बात किया है कि फिर भी इसको हम लोग सही नहीं मान सकते हैं. So that's why it was a factual based passage along with the speculations ki whether it should be considered or whether it shouldn't be considered. That's why the answer will be D, but abhi ignore this out क्योंकि we'll be discussing in detail about all of them. ठीक है, अभी अपना टोन का एक क्लास कंप्लीट अपना टोन का क्लास होगा, तो उसके लिए अभी टेंशन फ्री रहो. ठीक है, आई होप द क्लास वाज हेल्पफुल. आई होप यू all must have gotten some understanding to attempt the RC, the way to attempt the RC. You must have seen कुछ questions ऐसे होते हैं जिसमें even after clear understanding I also got stuck. ठीक है, तो इट्स द नेचुरल टेंडेंसी कि अगर तुम सारी चीजें समझ भी गए हो तो एट सम प्लेसेस यू विल गेट स्टक. तो इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू स्टे देयर और वेदर यू वांट टू मूव फ्रॉम देयर. मैं अपने आप को मूव करा लेता. जैसे उस क्वेश्चन में संस्कृति ने जिसका आंसर दिया था, उस क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला था कि यार ऐसे क्वेश्चंस मेरे को थोड़ा सा हिट करते हैं, और आई जनरली डोंट प्रेफर सच क्वेश्चंस क्योंकि मेरे पास 40 मिनट है यार. द थिंग इज कि आई हैव 40 मिनट्स. मेरे पास अगर 2 घंटा पेपर दे दो तो मैं गारंटी देता हूं मैं 66 आउट ऑफ 66 ला दूंगा, लेकिन है मेरे पास 40 मिनट्स. तो दैट्स द थिंग. ठीक है, तो आई होप यू ऑल मस्ट हैव गॉटन सम क्लैरिटी. ट्राई टू अटेम्प्ट द सेक्शनल्स, है ना?
सेक्शनल थर्ड या फोर्थ, मैं तुम लोगों को अभी कल सबको मैसेज जाएगा मेरे साइड से कि अभी तुम लोगों को कौन सा सेक्शनल देना है. Attempt that sectional. If you have any doubts, sit with me, or even you can discuss in the groups too. You can create a group of 3-4 people. जैसे तपन, शुभाली और आशुतोष was there. They connected with me yesterday. उन लोगों ने पहले आपस में बात कर ली, फिर they connected with me कि सर यार हम तीनों एक साथ बैठना चाहते हैं. I sat with them. तो इस तरह से तुम लोग अपने ग्रुप्स भी फॉर्म कर सकते हो और मेरे को बता सकते हो. बाय गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर रूइनिंग योर संडे, बट दिस इज हाउ इट इज. और ये तुम्हारी अभी नवंबर तक चलती रहेंगी, तो गालियां देते रहना. चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट.